जी ठीक है। सो एक और बैच 15, पांच तो हम बैच 15 के हो गए आउट ऑफ 50। ठीक है, एनी हाउ लेट्स स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ उमैर असलम, आई एम फ्रॉम बैच 15। करंटली आई एम वर्किंग विद जीके एलुमनाई एसोसिएशन, जो आई थिंक जिसने इस सेशन का आप लोगों के लिए फ्रीलांस सेशन का आपके लिए एक अरेंजमेंट की है। तो आई बिन वर्किंग एज अ वीपी मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। आई थिंक दिस इज़ my second time with JK Alumni Association for volunteering purpose। तो हमारे लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी सेशंस किए थे जिसमें मास्टर्स, हमने अब्रॉड मास्टर्स में जाना है या कुछ स्कॉलरशिप्स लेने हैं या फुल ब्राइट के लिए किस तरह अप्लाई करना है, उसके लिए हमने सेशन किए थे लास्ट टाइम। तो आई थिंक लास्ट बैच का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था, उसकी वजह से हम ज़्यादा इसको कंटिन्यू कर सके। तो इस दफ़ा होपफुली वो बैच ग्रेजुएट हो गया, तो इस दफ़ा हमारा न्यू बैच है, तो होपफुली इस दफ़ा अटेंडेंस वुड बी बेटर। तो हमारे साथ आई थिंक बैच 15 के, अगेन आई एम फ्रॉम बैच 15, हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैच 15 के हैं। उसामा, मैं इनका सिर्फ नाम ही बताऊंगा, बाकी अपना ये डिटेल्ड ओवरव्यू खुद देंगे। दूसरे हमारे साथ हसान मेलबर्न से ज्वाइन कर रहे हैं, मैच हारने के ताज़ा ताज़ा बाद फ़ौरन ये स्टेडियम से भाग के घर पहुंचे हैं आपके सेशन के लिए, तो कमिटमेंट है इनकी। तो यस, बाकी हमारे साथ बैच 15 के सलमान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आई थिंक लाहौर से। सलमान, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। हमज़ा ने हमें पोलैंड से ज्वाइन किया हुआ है, और सुहेब ने हमें, सुहेब नॉट श्योर आप कहाँ होते हैं, बट हाँ सुहेब ने भी हमें ज्वाइन किया था। He's in Ireland now. इन आयरलैंड। सो बड़ा डाइवर्स आपके लिए आ गया। एक्सपर्ट हमारे फ्रीलांसिंग के दो हैं, तो बट आप फ्रीलांस की आप डिमांड देख सकते हैं। बैच 15 आई थिंक जो ग्रेजुएट हुआ था आज से 12-13 साल पहले, वो लोग भी फ्रीलांस सीखने आ गए हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स माई इंट्रोडक्शन। आई हैंड इट ओवर टू उसामा एंड हसान। उसामा, आई थिंक लेट्स गो एट यू फर्स्ट। Sorry guys, बीइंग अ जीकेएन मैं प्रिपरेशन नहीं कर सका। मैंने कहा आखिरी वक्त पे करूँगा, लेकिन फिर आखिर में मुझे याद नहीं था मैच है, तो I'm gonna need your help now. So okay, so first of all, I graduated in 2009, batch 15, और एक साल मैंने जॉब की थी, और एक्चुअली मैंने फ्रीलांसिंग जॉब से पहले स्टार्ट कर दी थी व्हेन आई वाज इन ईयर 3। हाँ, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की थी, नॉट थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में। सो आई वाज गेटिंग पेड 5000 अ मंथ, जो स्टाइपेंड होता है उस ज़माने में। तो गलती से आई स्टम्बल्ड अपॉन ओडेस्क, which is now Upwork. तो उस पे मैंने देखा I could earn like $10 to design a logo, and I was like wow, like दो तीन लोगो बना के मैं जो महीने में कमा रहा हूँ यहाँ पे उतना कमा लूँगा। So that's how it started. I joined Autodesk. It took me a couple of months to get my first project. Lekin, as you say, the rest is history. So I've been programming in PHP since then. I started as a designer, लेकिन तब से फिर मैं programming कर रहा हूँ PHP वगैरह में. And it's been more than 10 years I've been freelancing as a PHP programmer. Uh, and that's all for me. I think Hassan अपनी introduction Yeah. करते हैं. So guys, I'm from batch 15 as well. मैंने एक साल इंजीनियरिंग की नौकरी की थी and I got sick of it and I quit. अब so like I'm giving you a bad case scenario जो मेरा था, which is कि I quit. I like यार मैं नहीं कर सकता. This is the end for me. I really don't like this job. I don't really like what I've done, and so I quit. And I'm like नहीं जी, I'm going to freelance. I like writing. I like doing some design stuff. That's what I'm going to do. And so I started looking around social media. Odesk पर मैंने start किया, and you get a few like आपको मिलते हैं शुरू शुरू में, you're like, oh, this isn't really working out for me. And then it took me like 6 months to get my first proper gig. And after that, actually मेरे साथ एक actually lucky हुई थी कि Usama's wife actually was running her own company. She just started her own company, and she was actually searching on Twitter. And I was on Twitter. I'm like, this name seems familiar, and that's kind of how I stumbled. Oh, this is Usama's wife, and that's great for me. And that was one of my like earliest gigs. And दूसरी होती साथ साथ ये थी कि I started working for some small businesses who were looking to get some stuff done for their website. And that's how I stumbled into the fact that, oh, writing ke saath, I need to know how to code at least websites really well as well. And since then, I've done a master's in communication and digital marketing. I'm currently working in Australia full time, and I still freelance part time. That's what I've been doing for the last like 6 odd years now. So I've like, while Osama will give you like a very heavy duty like full time experience on what how freelancing is, I can tell you how to manage it with whatever you're doing at the moment in your life. If you've got a full time job, if you don't have a full time job, or if you're just looking to just completely switch out of engineering, which if you're looking for to do it is perfectly fine. So don't worry about it. So I think Umair kick us off with a question.
ठीक है गाइज, आई थिंक जिस तरह उसामा ने भी शुरू में कहा था, हम भी जीकेन्स हैं, कोई ज़्यादा प्रिपरेशन करके नहीं आते, तो कोई स्लाइड्स वगैरह हमने किसी भी नहीं बनाई थी। पर्पज़ यही था कि विल कीप दिस इंटरेक्टिव। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगेन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ, रेज योर हैंड, या आप यू कैन टाइप। तो आई थिंक स्टार्ट में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक आई स्टार्ट, वो स्टार्ट कर देता हूँ ताकि सारे लोगों के लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना कि फ्रीलांस होती क्या है। कुछ कॉमन मिथ्स हैं, जिस तरह हम दाएं बाएं, लेट से मैं अभी जब इंटरव्यूज़ ले रहा होता हूँ जीकेएंस के, जॉब के लिए हो या इवन स्कॉलरशिप के लिए हो, तो उनसे हम पूछें कि फ्रीलांस का पता है। जिनको पता होता है 50% को पता नहीं होता, जिनको पता होता है वो ये कह रहे होते हैं कि लेकिन वो तो सिर्फ सीएस के लोगों के लिए। तो आई थिंक इस तरह के कुछ जो मिथ्स हैं, उनको हम करेंगे, उस पर डिस्कशन कर सकें, ताकि आप लोगों के जो इस तरह के कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में, वो क्लियर हो जाएं और हमें प्रॉपर पाथ अहेड मिल जाए कि लेट्स से हमें क्या क्या स्किल आनी चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। हसान, आपसे स्टार्ट करते हैं कि मेन अगेन मिथ, आई थिंक जितने भी लोगों से पूछें वो यही कहते हैं कि सर सीएस वाले की है या प्रोग्रामिंग वाले के ही फ्रीलांस कर सकते हैं, हम क्या करें, कहाँ तो इसको आई थिंक स्टार्ट विद दिस वन कि क्या फ्रीलांस सिर्फ सीएस ग्रेजुएट्स के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग आती है। अब लेट्स से मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग लेट्स अज्यूम नहीं आती और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हो सकता है, नहीं हो सकता? लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। Oh, it's easily doable, especially आज के दिन में, like you can actually get by without knowing programming to start off, and then once you become confident in your skills, you've got a couple of gigs, आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, then you can actually start putting in the time and effort to learn. Because website design में you've got so many tools जो आपको like literally drag and drop websites बनाने देते हैं. Canva is pretty much like lets you get by on basic marketing stuff without having to know Photoshop or GIMP or even having to do anything in Premiere or Vegas Pro, like इस तरह की चीज़ों में you don't have to use any of those high end tools. You've got all these like platforms जो आपको ready made like drag and drop करके करने देते हैं. So you have saying कि यार मुझे एक skill नहीं आती, I can't do it, और यार मुझे coding, I hate coding, मेरी पसंद नहीं, जो भी है, it's no longer an excuse. If you want to do something, उसमें start करो, you spend the time, and the biggest thing is basically spending time. हमारा and this thing we did in was कि हम JK में बहुत चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं, एंड दैट्स गुड. ठीक है, कोडिंग आपको नहीं आती, यू कैन लर्न हाउ टू कोड, इट्स वेरी इजी. आई टॉट माई लाइक डबल ई में था, माई कोडिंग वॉज टेरेबल, लाइक आई हेटेड इट, लाइक आई बेरली प्लेड सम ऑफ दोज यूनिट्स ऑनेस्टली. बट उसके बाद निकल के यू लाइक ओ, करना है, यू गेटिंग गुड रिजल्ट, एंड ऑनेस्टली जब आप पैसे दे के कुछ कर रहे होते हो, sometimes you don't put in the effort, but when you're getting paid for it, you kind of want to put in that effort. And up in this day and age, if you want to freelance, in what I've done basically is content marketing, some SEO stuff, if that's the kind of stuff you're looking to do, and it's those are skills that you can acquire without any specialist knowledge beforehand. So usme, it's you get in, you've got every free resource available, you don't have to pay to learn any of these things. It's just a matter of time. Google University, 4 weeks you'll be out with like basis of SEO. LinkedIn university, like LinkedIn has its own university platform, उसके अंदर आपको लिंक, if you're learning LinkedIn marketing, आपको वहाँ आ जाएगी. अगर आपने Meta, like if you want to go into the Instagram TikTok side, they've got their own tools, you learn all of that. जो एक genuine issue, one that will probably trouble you is in if you're specifically looking to do content, and उसके अंदर you'll have to put in the effort, because unfortunately there's no tool that will do the writing for you, वो खुद करनी होगी. तो उसमें ये कि like Grammarly and इस तरह के tools हैं that can help you like make sure you're doing everything right. लेकिन जो that barrier of entry is now so low कि यार if you figure out there's something that you like, if it's outside engineering, if it's within engineering, then तो बिल्कुल आसान है ना, then you know what you're good at, and then you do something else about it. What I got my start off with is magic. I spent a lot of time watching films and TV shows, which all of us do. And so what I was like, oh, I've got good writing skills, what can I do? And so I started off doing film reviews and TV show reviews for the longest time, like at least 2 saal mein, for a host of various websites I used to do that. And once that's something that you like doing, so you can actually make money out of it, and then that's how you transition to other things. That's how I realized, oh, I don't want to work in engineering, I'm making good money doing this, why don't I do that full time? And that's how I started. So वो एक जो skill ceiling है वो अब काफी नीचे हो चुकी है, because it's a democracy on the internet, you can learn whatever you want. ठीक है, थैंक यू हसान। उसामा, आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? या मैं कंटिन्यू करूँगा, बट जस्ट वन थिंग हसान, AI टूल्स प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने वाले तो काफ़ी पहले से आ गए हैं, जो आप जैसे आप कह रहे हो कि ऑटोमेटिकली कर Yeah. लेते हैं. अ वीक अगो आई वाज लुकिंग एट अ टूल जो कि आर्टिकल्स भी लिख देता है,
Oh And my god! I saw that one. Yes, yeah, I was hoping no one would Shreya point Reddy that out. was, yeah, I Shreya don't want to be Reddy, made redundant, guys. I don't want to be made redundant. Please, don't, let's not you will talk be about made those things. redundant soon. And the Yeah. article, it was about Pakistan startup ecosystem. AI ने लिखा था, और वो it was indifferentiable from like a content Oh, that's writing. It was beautiful. so good. That's beautiful. Yeah. So yeah, So like there you have it. There's like yet another tool. The thing is, everything's there. You just like if you just have to spend. The only thing is time. Like the value you have now is time. Like we are so easily distracted by our feeds all the time. Blah 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 blah. Like 10,000 चीजें आपके phone पे हवा कर रही होती हैं. It's and मेरे लिए सबसे बड़ा issue यही होता है. I get very easily distracted, but it's this thing. You put your like okay, I'm going to swear a bit, but swear. You put your shit away. You sit down and you do what you want to do, and then you move on. उसके बगैर the biggest issue with freelance that you'll find is कि यार if you have no one staring over your head, कोई teacher नहीं है या कोई boss नहीं है, कोई नहीं है, अपने आप को self manage जो करना होता है, that is the hardest thing you'll do. So it's just not going to work out. उसके that's बगैर absolutely true. Or about self-managed, I mean, like, we're going all over the place, but uh, so yeah, I had this meme over here, लेकिन I think मैं share नहीं कर पाऊंगा अभी. लेकिन it says something like, I didn't like having to work from 9 to 5 every weekday, so I quit my job and became a freelancer. Now I work 24/7. Not to scare you guys, but अगर आप discipline नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो this is going to become a 24/7 job. You have to, like, in the end आप 9 to 5 काम करोगे, लेकिन घर से काम करोगे, commute नहीं होगा आपको, ये आसानी होगी. अच्छा, so no, you don't have definitely have to be a programmer or a coder. In fact, according to the Pioneer Income Report 2022, the most highest paying jobs were actually in finance and marketing in freelance. So if you're good at marketing, if you're a finance or accounting person, you can go there. उसके अलावा you can be a VA, a virtual assistant. उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, स्पेशली जो लाइक entrepreneurs वगैरह होते हैं, they prefer hiring people here. और other than that, we have like content writing जैसे हसान, and many other fields, design वगैरह, कोई भी चीज़. Like Hassan said, आजकल इतना आसान है YouTube के ऊपर, whatever you want to learn, you can go and learn that. हमारे ज़माने में अगर YouTube होता भी था तो हमारा इंटरनेट इतना तेज़ नहीं होता था. और ऑनेस्टली मुझे याद है एक MIT का ओपन कोर्सवेयर होता था जहाँ पे आप जाके उस ज़माने में कोर्सेज कर सकते थे. अदर देन दैट देयर weren't many things. आपको जाके बुक खरीदनी होती थी. अब आप सब कुछ फ्री में कर सकते हो. So it's really nice now. Other than that, yeah, so learn. That's the most important thing. आप अभी भी learn करोगे, आप पहले भी learn करोगे, और आप 10 साल के experience के बाद भी learn करोगे. ऐसे मेरे साथ हुआ है कि अगर लाइक थोड़ी सी लंबी जॉब अगर मैं कर रहा हूँ, 1 साल किसी के लिए मैंने काम किया है जिसमें हम फिक्स टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, और वो जब जॉब ख़त्म होती है, अब बाहर जाते हो, आप देखते हो कि लाइक दुनिया बदल गई है पूरी. न्यू टेक्नोलॉजीज हैव कम अप. जो लाइक मैं एंशियंट चीज़ों में काम कर रहा था, इतनी नई चीज़ें आ गई है. एवरी ईयर यू गेट ऑब्सलीट. यू हैव टू कीप रिन्यूइंग योरसेल्फ. ठीक है हाँ. सो या. नहीं नहीं, दैट्स उसमें actually I'll add up to that क्योंकि I took a break like 2 साल मैंने बीच में जो मास्टर्स किया था, so when I got back into the field like masters obviously you think कि आपको मास्टर में like सिखाए जो चीजें सिखाए जा रहे हैं those are like soft like generally आप soft skills सीखते हो, that's the real takeaway long term takeaway of any education that you have, which is कि you get good soft skills. But when I got back into the industry like दुनिया कहाँ की कहाँ निकली in those 2 years TikTok blew up. When I came like TikTok was not a thing before I was working. जब मैं बाहर निकला I'm like oh here I am going to make some good images, and everyone's like, "Nay, can you do TikTok videos?" I'm like, "Do I look like I can do TikTok videos?" Nay, but then you have to hire obviously hire other like younger people to do that for you. But the problem with anything that you're doing in the digital space is that you if you're not on top of your technologies, you are going to fall behind immediately. ठीक है हाँ. नहीं नहीं, दैट्स रियली हेल्पफुल हसान और उसामा. तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स जो नॉन सी एस इवन नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से हैं, मटेरियल्स के हो गए, अब सिविल भी जीआई के में स्टार्ट हो चुके, इवन बिजनेस वाले भी हैं. तो आई थिंक गाइस अगेन यू गाइस कैन गेस फ्रॉम दिस गाइस, अगेन यू कैन इजीली लर्न. और अगर इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो is it's easily doable in 2022 with all these resources available online. I think it's up to you, आपकी will कितनी है, और anyone can do it easily. तो आई थिंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव इन माइंड. अगेन गाइस, अगेन जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज़ रेज योर हैंड और अनम्यूट योर सेल्फ और टाइप कर दें, तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछ लेंगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक माइंड में आता है कि पढ़ाई के साथ लेट से होता है जी, हम पढ़ रहे हैं जी आई के में, वी हैव बिन देयर कि बहुत ज़्यादा रगड़ा है जी. 2 बजे तक क्लासें होती हैं, 5-8 बजे तक लैब होती है, उसके बाद क्विज होते हैं, मिड होते हैं. तो डू यू थिंक इस पे वन कोई इम्पेक्ट होगा हमारा स्टडीज़ पे
दूसरा क्या स्टडीज़ के साथ बंदा काम कर सकता है? कैन समवन फ्रीलांस साथ साथ स्टडी के साथ करते हुए जीआई के में? इज़ दैट डूएबल? हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं ऐसी? तो फॉर दिस उसामा, लेट्स स्टार्ट विद यू। यस एब्सोल्युटली काम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन माय एंड ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई डिस्कवर्ड ओडेस्क। और उसके साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया था, और डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर था उस ज़माने में, और डिज़ाइन का काम करता था। एंड आई फाउंड माई वन ऑफ माई फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स, लोगो डिज़ाइन करता था। देन आई फाउंड रिलेटिवली कंसिस्टेंट क्लाइंट, यूएस का था, थाईलैंड में था वो। और जीकी में उस ज़माने में इंटरनेट बहुत बहुत स्लो होता था। तो और ये 3G वगैरह भी नहीं था, तो मेरे पास एक वो ब्लूटूथ डिवाइस होती थी, तो मैं फ़ोन का 2G उसे यूज़ करता था। और मेरे अभी तक वो अपवर्ड के रिव्यू में उसने लिखा हुआ है कि आई आई वुड हैव गिवन इन 5 स्टार्स, लेकिन मैं सिर्फ इंटरनेट के लिए उसको ये इतने दे रहा हूँ कि इंटरनेट इसका बहुत बकवास है। वो जब भी कहता था स्काइप पे आओ वीडियो कॉल करो, मैं कहता था टेक्स्ट चैट नहीं हो रही, आप वीडियो कॉल क्या करेंगे। एनीवेज, सो यस एब्सोल्युटली सब कुछ आपको मैनेज करना होगा। यू गॉट हैव, आप टाइम सेट करें अपना। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट फ्रीलांसिंग इज कि यू डोंट हैव टू पुट 8 आवर्स अ डे। आप 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए काम कर सकते हैं। कम अमाउंट का काम पकड़ें आप। वेन एवर यू आर अप्लाइंग टू जॉब्स, वो बताते हैं कि इतनी देर का काम है, इतना फुल टाइम काम है, ये थोड़ा सा काम है। और ज़्यादातर काम जो होते हैं बहुत कम होते हैं, 10 आवर्स, 5 आवर्स अ वीक का होता है। तो यू हैव कंसिस्टेंट वर्क ओवर देयर। The harder thing is finding work, of course, but that's a separate topic. Uh, आप अपनी स्टडीज बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, बट इफ़ यू स्ट्रगलिंग, स्पेशली इन जी की, इफ यू स्ट्रगलिंग, तो आई वोंट रिकमेंड इट। लेकिन इफ थिंग्स आर गोइंग गुड एंड यू हैव टाइम एंड यू वांट मनी, बिकॉज इट्स गुड मनी, तो यू कैन कम हेयर। मैंने मास्टर्स के टाइम पे लाइक आई केप्ट माय फ्रीलांसिंग गोइंग ऑन द साइड व्हेन आई वाज स्टडीिंग फॉर माय मास्टर्स एंड उधर ये होता है कि बिकॉज मास्टर्स भी सेल्फ मैनेज होता है लाइक मोस्टली नो वन रियली लाइक यू नो नो टीचर्स गोइंग टू से ओ यार आपने असाइनमेंट सबमिट कराई यू weren't there for the quiz all of those things तो वो यू काइंड ऑफ ऑलरेडी इन दैट जोन जब आपने अपने आप को मैनेज कर बिकॉज अदरवाइज यू गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग लाइक वो दे डोंट यहाँ पर दे डोंट केयर दे गेटिंग लाइक a lot of money from you they don't really care कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो like zero care होती है so you have to do this yourself like and I'm someone who struggles with like routines so there were many sleepless nights for me and that's what will happen आपने अगर करना है तो करना है this is the one thing you have to understand कि if you take this up with your studies you have to do both there's no choice एवरीथिंग लाइक आपने खेलना है वेलियां मारनी है दोस्तों के साथ जाना है सब कुछ कर लो बट उसके बाद घर आके सो नहीं सकते देन यू जस्ट लूज योर स्लीप दैट्स इट इट्स एज सिंपल एज दैट इसमें कोई लाइक देयर इज नो शुगर कोटिंग दिस आप करोगे वरना यू विल बी इन ट्रबल लाइक फाइनेंशियली ट्रबल में हो गए आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी स्टडीज फेल हो जाएंगी ऑल योर मनी गोज डाउन द ड्रेन सो देयर इज नो गेटिंग अराउंड दैट ये करना है नहीं करोगे तो नहीं होगा बस दैट्स इट इट्स दैट सिंपल एंड वी हैड अ क्वेश्चन आई थिंक हाँ, नहीं, मैं भी उस बीच पे में आ रहा था। शहरियार मलिक, आई थिंक यू रेज्ड योर हैंड। शहरियार, आपका क्या क्वेश्चन है? आप उसे अनम्यूट कर जी लो। जी, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा क्वेश्चन उसामा भाई और हसन भाई से है कि आपने जैसे बोला है कि हम मैनेज उसको करेंगे जब जॉब हमें मिल जाएगी, लेकिन जब हम फाइवर पे कोई गिग्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो इट इट इज़ द हार्डर टाइम कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कि वेट करना पड़ता है, पेशेंस शो करनी होती है। लेकिन हम वहाँ पे पेशेंस हार जाते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते बहुत से मंथ्स में ना। तो आप हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं, मोटिवेट करें कि हम वहाँ पे मतलब पेशेंस शो कर सकें। ठीक है हसान, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद यू ऑन दिस वन। yeah, I'll tell you what like it's unfortunately like a good motivator is knowing that you have bills at the end of the month. You know it's adult. It's like it's just like the sad reality of adulting. कि नहीं, yeah, you have if you have responsibilities that there is nothing that will motivate you more than the fact that आपको responsibility meet नहीं कर सकते. If you have dependents, if you're your own dependent, it's that. जहाँ तक डे इन डे आउट की मोटिवेशन होती है उसमें जो वन वन थिंग दैट रियली हेल्प इज हैविंग अ ग्रुप ऑफ पेयर्स हु आर डूइंग द सेम थिंग सो आप एटलीस्ट यू नीड टू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम कि आपके दोस्त हों जो सारों को नहीं मिल रही किसी एक को मिली हुई आप उसको बैकअप करो आप सारों को नहीं मिली आप बैठो यू नो कंप्लेन करो look at each other review each other's work try to make you know help them get better जब मैंने स्टार्ट किया था आई रियली डिडंट हैव एनीवन शुरू में बिफोर आई लाइक एक दो गिग्स हो गई थी कोई भी नहीं था मेरे पास and then genuinely like मेरी luck ये थी कि so Sama's wife was really helpful she helped me with because she had already been through this you know setting stuff up so she helped me a lot on this so if you've got someone who can mentor you in this case you know reach out to us absolutely
like I'm completely open, like open, like my messages open होते हैं LinkedIn पे, you can reach out to me there. If you have someone who can, like, if you have a support system, if you have a mentor, like someone to guide you through this, that is the only way you can keep your motivation up, क्योंकि काम एंड द एंड आप नहीं करना है, कोई आपको हाथ पकड़ के करा के नहीं देगा. And portfolio अच्छा बने, you keep putting in the job, you have to put in like 6 months. And मैंने like मैं क्या 22 साल का था, 23 साल का था, like an idiot मैंने जॉब क्विट कर दी, so I had nothing happening for me. तो 6 महीने I had like literally no money. So that was as good a motivator for me कि यार नहीं, हर रोज बैठना है, अपलोड करना है, पोर्टफोलियो अपडेट करो, सीवी को 10 दफा एडिट करो, ये करो, वो करो, लर्न न्यू थिंग्स. सो दैट थिंग इस तरह होती है, वो यू आइदर लर्न थ्रू हार्डशिप और यू लर्न थ्रू डिसिप्लिन. ये दो दो चीजें होती हैं, एंड दो दैट्स व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. सर पे डंडा हो तो उससे बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो और आप स्टूडेंट हो तो उसके अंदर से, आपके अंदर से निकलनी चाहिए. अगर आपका पैशन है, आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, तो दैट विल मोटिवेट यू. लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सबसे मुश्किल काम ये होता है, कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस फेस करने के बाद करते 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 बंदा गिव अप कर देता है, 90% गिव अप कर देता है. मुझे भी 2 महीने 3 महीने जॉब नहीं मिली थी, और मैं कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं रोज़ बैठ के लगा हुआ तो बहुत मोटिवेशन थी, नहीं थी. ना मुझे पैसे चाहिए थे, ना स्कूल यूनिवर्सिटी में था आपकी तरह. मैं भी हफ्ता हफ्ता रोक देता था, गिव अप कर देता था, फिर दोबारा मोटिवेशन होती थी. तो एक एक ये चीज़ है कि जो आप काम कर रहे हो, यू हैव टू ऑल्सो एन्जॉय दैट. अगर वो आप एन्जॉय करते हो, तो आप फ्री में भी अगर वो करने को तैयार हो, तो दैट्स इनफ मोटिवेशन फॉर यू. इट्स गुड. अगर आप फ्री में एन्जॉय करते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेटर क्या है. तो या यू गॉट कीप अप्लाइंग, कीप टेलिंग योरसेल्फ कि अगर 2 या 3 महीने में आपको फाइवर पर प्रोजेक्ट नहीं मिले, दैट डज नॉट मीन कि आप अच्छे नहीं हो. सकते आप अच्छे ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे भी हो तब भी आपको नहीं मिलेगा, एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो कीप गोइंग ऑन. जिस तरह से कहते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस टेक्स years, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड देन एकदम से सक्सेस आती है तो फिर आनी शुरू हो जाती है. डोंट गिव अप, जस्ट कीप अप्लाइंग योरसेल्फ. I have a spread, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना, so I had to start a spreadsheet because there's like multiple types of CVs. तो उसके अंदर I had 163 rejections before I got my first gig in Australia, and that took 7 months here. So like rejection is constant and long, and you have to remember जब यहाँ पर आते हो तो आपकी PKI की saving, like it goes like crazy. So वो डंडा motivator, it's very hard to be motivated some days, and some days you won't find that motivation, and that's okay. आपको बस याद रखना है कि यार if you're not motivated for 2 or 3 days, चौथे दिन मोटिवेट जब भी हो गए, देन यू पुट इन द आवर्स, यू मेक श्योर यू कैचिंग अप, सारा कवर कर रहे हो. इट्स there'll be ups and downs. It's not an easy game to be in. And I think we have another question हाँ, कहीं नहीं पे नहीं, उसमें एक मिनट हसन, उससे आई थिंक चैट पे आया था. 2-3 क्वेश्चंस हैं और एक ने रेज हैंड भी रेज किया हो, लेकिन उससे पहले आई थिंक बेसिक सा क्वेश्चन, आई थिंक जो कुछ लोगों के जिनको बिल्कुल फ्रीलांस का नहीं पता होगा, तो लेट से किसी ने आज स्टार्ट करना है, तो आप लोग प्लेटफॉर्म्स बता सकते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स, पहली प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, और उस पर जाके जस्ट लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी होती है, क्या करना होता है, स्टार्ट जो आप प्रोजेक्ट की बिड कर रहे हो, तो आई थिंक किसी बंदे को वो भी नहीं पता लेट से, तो आज किसी ने इस सेशन के बाद फ्रीलांस स्टार्ट करना है, तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए. गाइस अगेन, ये मोहम्मद अली और अब्दुल हादी, और एक बंदे ने क्वेश्चन हैंड रेज किया, विल कम टू यू, बट अगेन जस्ट फॉर सम फोक्स हु डोंट इवन नो अबाउट फीवर एंड अपवर्क, तो आई थॉट टू आस्क आवर एक्सपर्ट कि हमारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स कहाँ हैं जहाँ जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है और जहाँ जाके यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्रीलांस वर्क. उसामा, लेट्स स्टार्ट विद यू. या श्योर. मैं एक ये लिंक शेयर करूँ. इसके अंदर मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स लगाए हैं. जैसे अपवर्क की हम बात कर रहे हैं, अपवर्क इज़ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म. इसके अलावा फाइवर है, जैसे उन्होंने मेंशन किया, फाइवर है. आई एम नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन मैंने देखा इस पे प्रोडक्ट्स वगैरह. आई टेल मोर अबाउट दिस. एंड द थर्ड इज टॉकटेल, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो अपवर्क इज़ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म. इसको पहले ओडस कहते थे मैनी ईयर्स वो, और मैंने भी यहाँ से स्टार्ट किया था. इनफैक्ट मैंने एक और जगह से हायर किया था, स्टार्ट किया था. मेरे फर्स्ट क्लाइंट ने मुझे पेमेंट नहीं की थी. दैट वाज द ओनली टाइम आई डिडंट गेट पेड. $10 थे. मैंने कोई 2 महीने बैठ के उसका काम करता रहा था, आखिर में वो लेके भाग गया, उसने काम किया. ऐसे भी होता है. अच्छा, तो अपवर्क पे व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफाइल. उसके अंदर आप अपनी तस्वीर लगाते हो, बहुत अच्छी प्रोफेशनल तस्वीर लगाओगे. आप लिखोगे कि व्हाट डू यू डू. ठीक है. इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू डू, तो आप एक काम करो, गो टू द जॉब्स, सी किस टाइप की जॉब्स आ रही हैं. डेटा एंट्री की जॉब्स आती हैं, उसमें आपको स्किल नहीं चाहिए होती, बस बैठ के लिखना होता है. वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट वगैरह की आती हैं. वहाँ पे आप अपना
पास्ट वर्क लिखोगे, अगर आपका प्रीवियस काम नहीं है, जॉब्स वगैरह नहीं है, आपने काम नहीं किया हुआ, तो आप जीके के प्रोजेक्ट्स एंटर करोगे, व्हाट यू हैव डन ओवर देयर, और एड एज मच डिटेल एज पॉसिबल, एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि उसमें इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दो, दैट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक, क्लाइंट्स की मैं बात करूँ। सो पुट योर प्रोजेक्ट्स ओवर देयर, अपनी एजुकेशन वगैरह लगाओ कि क्या एजुकेशन है, आपने क्या काम किए हैं, जीके में क्या प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, और ट्राई टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने फोटोशॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल की हुई है तो प्लीज़ डो नॉट एंटर फोटोशॉप, अगर सिर्फ इंस्टॉल की हुई है, आपने कभी खोली भी नहीं, कभी यूज़ भी नहीं की, बिकॉज आई थिंक मैनी पीपल डू दैट। ठीक है, और फिर आपको आवरली रेट लगाना होगा, वो आप जाके देख सकते हो कि दूसरे लोगों ने कितना किया हुआ है। इट्स योर कॉल, वी विल टॉक मोर अबाउट दैट लेटर। सो दैट्स अपवर्क, आई रिकमेंड यू स्टार्ट ऑन अपवर्क। और फाइवर भी आप जाके देख लें, मैंने फाइवर पे ज़्यादा काम नहीं किया तो आई कॉन्ट से मच अबाउट इट। And the third is TopTil. TopTil has like the top 3% talent they claim. And although I recommend that if you have a few years of experience, then go to TopTil. I'm on TopTil, and you can use this link. It's a referral link. Uh, Hassan, do you want to say more before I continue? So मैं बताता हूँ. So I pivoted very quickly from Upwork पे जब Odesk पे जब मैंने start किया था, because I was spending a lot of time on Twitter, and especially because I was looking to do writing. Writing like was very popular on Twitter for like start off. It's just that platform जहाँ पर हर किस्म के like marketing, non-marketing writing वाले थे. So I basically lucked out there, and so what I basically had was I had like one simple कहते हैं about dot me and all of these tools are there. So तब उस वक्त वर्डप्रेस पे एक गंदी सी like website मैंने अपनी बना के like एक अपनी शक्ल लगा के थोड़े से written pieces, हर किस्म के reviews, fiction, non-fiction, all the things that I could do, वो एक बना के मैंने रख लिया था. And I used to basically like throw that at people who were actually looking for it on Twitter. So this idea that because Upwork has a lot of competition, all these places have competition, and you're obviously looking to diversify, but the thing is you also have to remember a lot of people, especially in creative industries, if that's where you're looking to be, if you're looking to work in video. So I've like written for some small video games, like the indie games UK ki hain uske liye. There's a lot of like interesting kind of creative work you can do, and you will find those people on Twitter because they're वो बैठे होते हैं, that's where they're talking to each other. Hashtags के साथ वो tweet करते रहते हैं. They're like, if you can look around, uh, actually you can just contact me for some of those as well. मैं आपको बता भी दूंगा off like hand, मुझे याद नहीं, I've got them on my tweet deck. So it's where you'll find all these things. So there's like, while you're doing, because once you set up your Upwork, you've started putting in like your projects आपने सारा कर दिया, then it's a waiting game, आप apply कर रहे हो. So what do you do in that time? You hop on Twitter, you hop on somewhere else, and you make sure okay you've got like something to send out to people that's beyond Upwork. अगर आपको नजर आता है, you look around, you reach out to people. Like, I don't know, what do I know about writing video games? Nothing. But there was someone who was saying, yeah, oh, I need someone to, do one chapter of a small sci-fi game they were making. I'm like, yeah, I can give it a try. And मैं और तीन चार लोगों ने ट्राई किया, उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया. I wrote a chapter for it, and it just happened. So while the luck's there, the fact was that I was there every day for 7 years, looking at hashtags, making sure I'm talking to people. Rejections मिल रही हैं, मिल रही हैं, मिल रही हैं, मिल रही हैं. And so it's again back to that consistency कि once you've done your basics, आपने अपने hourly rate वगैरह define कर लिए हैं. एंड उसमें एक जो जरूरी चीज़ है कि प्लीज स्टडी योर मार्केट. अगर आप यूके में कर रहे हो, अगर आप यूएस में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, हर एक के अपने रेट सेपरेट रखो. मेक श्योर यू नॉट गोइंग टू लो. आपको वो कहेंगे ओ यार दिस पर्सन हैजंट नोन मच. इफ यू कंपेटिटिवली हाई और अ बिट हाई, यू कैन लक आउट. ठीक है. एंड सो दैट वर्क आउट. सो लाइक फॉर इंस्टेंस, मैंने जब यहाँ लाइक ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया था, तो आई वाज स्टार्टिंग ऑफ अबाउट $35 an hour, and I currently do $150 an hour, and it's the same work. But because I've got more experience, people know of me here, so I can actually charge those rates. So if you start too low, like the manage 35K because I was too low, so it took me like first like 4 or 5 gigs for someone to tell me, hey, we're paying you this money, but I just want to let you know that job, please ask for more. You do good work. You're way below the asking rate. So वो जो हमारे एक आइडिया होता है यार, अंडरसेल करके शायद हमें मिल जाएगा, generally may not work. So वो that's a fine little balancing act that you'll have to do. ठीक है. नहीं हसन, दैट्स अ गुड पॉइंट. आई थिंक इसी तरह अगेन हसन, तीन लिंक्स गाइस I उसामा. would like to add to that a little सॉरी. bit. हाँ. While this may not apply to fresh graduates, etc., लेकिन हसान का पॉइंट बहुत अच्छा है. इनफैक्ट जो मेरे वर्स्टेस्ट क्लाइंट्स थे, दे वर द लोएस्ट पेइंग क्लाइंट्स,
और जैसे जैसे रेट्स बढ़ते गए, आई गॉट द नाइसेस्ट क्लाइंट्स, बहुत अच्छे, लाइक this is magical. It happens. It's very true. Although in the very start you might have to lower your rate. Although Hassan is right कि इसमें आपका impression गलत आता है, लेकिन just एक to build some experience on the back, ताकि आपको दिखाने को कुछ हो कि आपने इस पे काम किया, उस पे काम किया, रिव्यूज आपने बिल्ड किया, और आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा इस तरह से. And again, it's anecdotal. Like मेरे केस में ये था कि मेरे लिए it didn't work out. Sometimes for some people it works out. Yeah, वो under like they undersell their rate for a bit. They get a few gigs and then they can go up. It works. So it's finding that balance for yourself. Like अगर if it's not working for you, try the other way. Like ये है कि just static नहीं होना, just keep experimenting. Like ego बीच में अपने नहीं लेके आनी किसी point के ऊपर. वो like if you feel like oh यार I'm too good for this, या क्या time ज़ाया कर रहा हूँ, then you've kind of like hit that wall जिसको आप खुद नहीं cross कर सकते. ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू हसन फॉर एडिंग ट्विटर। आई थिंक इसी तरह मैंने जो दाएं बाएं से सुना है, लिंक्डइन पे भी काफ़ी लोगों को नॉट प्रॉपर फ्रीलांस वाला, बट अगेन पीपल आर देयर मार्केटिंग के, हमें इस टाइप के बंदे चाहिए, तो लिंक्डइन इज अदर टूल जहाँ आई थिंक नॉट ओनली जॉब्स पर के फ्रीलांस। अगेन आई नो फ्यू फोक्स इन माई कंपनी जो कि प्रॉपर जॉब भी कर रहे हैं और फ्रीलांस के लिए उनको लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल दीज आर प्लेटफॉर्म जो हमने अपने एक्सपर्ट्स ने भी बताया, उसामा ने लिंक भी शेयर कर दिया है, इनको आप अपने उसमें रखें, इनको गो थ्रू करें और जो आपको बेस्ट लगता है स्टार्ट विद दैट वन। सो एब्सोल्युटली, लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस. वहाँ पे प्रॉपर जॉब्स भी आती हैं, एंड अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है तो इवन क्लाइंट्स अप्रोच यू. लास्ट ईयर एक ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट ने अप्रोच किया था, एंड दे वर रियली गुड पेइंग. तो लिंक्डइन हैपन्स. एक और चीज़ ये भी है ना कि अपवर्क और ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, दे add considerable fee on top of your hourly rate. Hmm. So अगर आपको डायरेक्टली क्लाइंट मिल जाए तो you can charge a good amount. दैट्स अ गुड क्वेश्चन हसन। आई थिंक मोस्ट उसामा वो मोस्ट प्रोबब्ली आपने हसान का क्लाइंट चोरी किया ऑस्ट्रेलिया से, तो हसान इसको नोट कर लो। ये नोट किसी ने, कर हाँ किसी यहाँ है ही 5 क्लाइंट ना सिर्फ से. किसी क्वेश्चन मार्क के डीपी के साथ विद नो नेम ने हैंड रेस किया, तो जो भी आप प्लीज गो अहेड और आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। So, hello, hello. Maybe I'll just turn on the Oh video my as well. God. So, We've got as मिस्टर तिरुमल साहब, आप बैच 30 में कब से आ गए? मैं बैच 30 में मूव कर गया हूँ वापस. So just for everybody else, thank you for thank you for organizing this, Hassan and Yeah. VP Mark and Osama also. Nice to see you. So I'm also in batch 15. यहाँ पे छुपे in incognito till now. And I'm on the other side. I'm in Germany these days, and I'm running a small company, and we are looking to outsource some of our operations to Pakistan because it's very expensive to hire engineers here. I'm telling you, this is We have a tough. client here. Yeah. So from the other side, um, what are the trends for freelancing? So I'm unfortunately not in tech. I'm not in tech. I'm in semiconductors. We make microchips and stuff. Are there deep tech freelancing operations also happening in this industry? Do you see jobs with it's a technical software, finite element, things like that, Comsol? Does this also exist? Do you know It's of? I've seen people who are doing this. Like they're not like fresh grads. I've seen a lot of people जो कि at least on the hardware design side कर रहे हैं काफी ज़्यादा. So they basically instead of working full time for like a chip manufacturer or something, what they do is that they go in for the project, hop in, काम किया, निकल के, move on to the next, and it's mostly like for like odd किस्म के fab design के pro कर रहे होते हैं, because most of them are like यार the good jobs are in Taiwan and TMSC, उसके अलावा कहीं भी नहीं हम काम करेंगे. So Hmm. it's that weird. They're hopping to the US to do some small stuff there, and then they jump back to Taiwan because that's where most of the work is for them. But it's a very niche thing, and if you're genuinely looking to like hire, so it'll be an interesting like कहते हैं Yeah, if you experimental. if you do like a quick survey here, like we have a few You have a GKNs lot who of are yeah, you also have a lot. You studying. can Yeah, go ahead, go so ahead. maybe you could take. How many of you have heard of COMSOL multiphysics? Like, do you study this? I think ES may या कुछ multiphysics simulations, piezoelectric. Can you raise your hand? Like, just raise your hand for momentarily if you have ever heard of this. So just I get a little feeling. No, yes, maybe, no. Okay, No, I would assume that's a no. I think we're going to assume that's a no. Yeah.
Okay. So, but here's a Okay. question: How Hmm. can you point them in that direction? Can they? Is this something they can learn on their own while they're studying for their undergrad? Yeah, and again, that brings me to my next one. I've written a big bunch of questions. I've done my preparations already. So the Okay. next question is, how do you deal with software licenses as a freelancer? Because some of the softwares are open source and okay, Inkscape वगैरह आ जाता है, but if you're willing to buy software and use it, it's pretty expensive. Console costs like one license costs 20,000 euros or something. लेकिन पाकिस्तान में तो पायरेसी चल रही होती है, तो इसलिए हाँ, वो Pakistan. हाँ. So I Pakistan में जब मैं था, I pirated the hell out of everything. But यहाँ आके जो है basically I had to switch out of Adobe because Adobe went to that whole subscription model hell, which जिन is just जिंदाबाद. way too expensive. So I switched out basically shortcut for my video editing tha, and like a mixture of like GIMP and some other things for photo editing and stuff. उस time पे मैंने किया था because there's just no way. Microsoft Office को skip करके Google Docs के ऊपर shift हो गए. Stuff it's just stuff like that because it's just everything costs for you. So yeah, well, actually, which is actually a good point, guys. Please, Pakistan में हो piracy को आराम से enjoy करो because once you leave, you will have to like learn alternatives, and it's okay to pirate. By the way, it's okay. Like, these are billion-dollar companies; they can afford to lose a few subscriptions. Umair reminded to censor this part. ठीक है। नहीं यार, आजकल बहुत बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं. आई एम लाइक रिसेंटली बीइंग अ प्रोग्रामर, लिनक्स की शेल से तो काफ़ी अर्से से काम है, बट रिसेंटली आई एम ट्राइंग टू पर्सनली मूव टू लिनक्स एंड आई हैव नोटिस के हाँ, विंडोज़ मैंने बाय की हुई थी. मैं अपना आई डी ई बाय करता हूँ, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है. आई बाय दैट $70 अ ईयर है एंड इट्स डूएबल फॉर मी. अदर देन दैट मैंने फ़ोटोशॉप छोड़ दी है. और ऑफिस के इतने अच्छे नहीं आए. लीब्रे ऑफिस है और ये इस तरह के हैं. गेम इज़ अमेजिंग. और इनफैक्ट इफ़ यू इनटू फोटोशॉप तो आप गूगल करो ऑनलाइन फोटोशॉप एंड द फर्स्ट लिंक दैट कम्स अप is a photocopy of Photoshop. It's exactly the same and it's online. You don't have to download anything, pirate anything. So बहुत अच्छे alternatives हैं. Like तैमूर said, मेरी कंपनी में क्या होता है कि जो बहुत expensive software होते हैं ना, the client often pays for them. They get you a license and then you can use that. तो जो चीज़ें, क्योंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से pirated पे भी नहीं मिलते, जो बहुत obscure टाइप के होते हैं. तो Hmm. यार है. Very nice, nice. Thanks. Let's continue. Thank you, Taimur. Nice seeing you after ages. So, Osama, I think next question मोहम्मद चैट से ले रहा हूँ, मोहम्मद अली का है. Again, you can read it. I can read it aloud as well. How can we start off our freelancing career in tech? Do we have to pivot our existing tech expertise or get into the new stuff, Web3, AR, VR, etc? लाइक फ्रीलांसिंग करियर इन टेक, तो जिस तरह से हमने बताया, आप अपवर्क ज्वाइन करें, अपवर्क में अप्लाई करें. अगर आपको पहले से प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है तो आप वो प्रोजेक्ट्स लिखें. चिकी में हमने जो काम किया वो लिखें. इफ़ यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग, इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड वगैरह, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ गेट इनटू ओपन सोर्स. इतने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं. गिटहब पे उनके प्रोजेक्ट्स, उनका सोर्स कोड होता है, उन पे काम करें, उनकी बग फिक्सिंग करें और पुल रिक्वेस्ट उनको भेजें. उनको पसंद आए वो एक्सेप्ट कर लेंगे एंड दैट विल बी अ ग्रेट ऑनर एज वेल एज इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट पोर्टफोलियो. आई मीन मुझे ये चीज़ बहुत देर से मुझे ख्याल आया था, मैं खुद ओपन सोर्स में नहीं जा सका, लेकिन इफ़ आई हैड टाइम एंड डिडंट हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मैं यही करता. और ओपन सोर्स से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है और आपको फ़ौरन अच्छी कंपनी हायर कर लेती हैं. प्लस आपका नाम उधर जाता है. एग्जाम्पल वर्डप्रेस पे कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था और उनका कोड, नहीं वर्डप्रेस सारी कौन सी चीज़ थी, उनका कोड पे नासा में यूज़ हुआ था और उनका नाम उस पर उनके स्पेशल पेजेस पे आया था कि दिस कोड वाज यूज्ड इन आवर रॉकेट और व्हाटएवर. तो दैट्स समथिंग रियली लाइक उसमें आपको ऑनर टाइप होता है. एंड रिगार्ड्स, जो आप टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, इफ़ यू कैन गो इन टू ए आर वी आर वेब थ्री, दिस इज़ द फ्यूचर. इट विल बी अमेजिंग टू गेट दिस. लेकिन थोड़े से ट्रेड ऑफ्स होते हैं. अगर आप ये नई चीज़ों में जाएंगे, दे आर द फ्यूचर. मे बी 5 years फ्रॉम नाउ यू विल बी इन डिमांड, मे बी नाउ यू विल बी इन डिमांड, लेकिन इनका डिमांड इज़ नॉट एज हाई एज कम्पेयर टू रेगुलर बिजनेस वेबसाइट्स. ये पुराना बोरिंग स्टफ होता है, पी एच पी, नो जावास्क्रिप्ट भी. बेसिक वेबसाइट्स होती हैं जिन पे असल में कंपनीज पैसा कमा रही होती हैं, उनकी जॉब्स भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं. कंपटीशन भी है पर जॉब्स भी भरी हुई हैं. एआई वगैरह इनकी पेज ज़्यादा होगी लेकिन शायद इनकी डिमांड इस वक्त कम है. सो I think दैट्स. it depends on your goal. अगर आपको if you're in it कि यार मुझे पैसा I need to have a source of like steady stream of income, so you go for the boring stuff that comes in volume. Like there are like small businesses बहुत ज़्यादा हैं who like it old people who
like retirees who's opened up a bakery, something of that. Like it's like there are people who are like, yeah, oh, we need someone to make a website, or we need someone to run deliveries, or run our small warehousing का software को चलाना है, something of the sort. And they're all out there, उनको ढूंढना होता है. So that's boring work. It's not going to pay as much, but it's a steady stream. While if you're looking to do experimental stuff, and especially अगर Web3 पे देख, like Web3 पे जाए तो again I recommend Twitter, because mostly because Web3 के जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको Reddit के बाद मिलनी है, वो जल्दी मिलनी है आपको. AR VR में आपको थोड़ी सी आई थिंक लर्निंग कर्व ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली इफ यू हैव टू लर्न like Unreal Engine या something, depending on what you're learning. Like उनके थोड़ा सी बैरियर ऑफ एंट्री ज्यादा हो जाती है, so ये you'll have to look basically specifically kya karna hai. So like Meta, like, I don't know what Meta is building on. Actually, I haven't looked. They're using a proprietary engine that just looks terrible. But if you look at like actual VR like stuff that's beyond just video games, it's all running on Unreal Engine, simply because Hollywood ने भी उसको take up कर लिया. Like the new Star Wars series were all mostly made on Unreal Engine 5. So ये आपको एक extra like learning होगी. And because I've been learning Unreal Engine 5 recently myself for some work, it's easy to learn, but it's really hard to master. And the problem is that there are really talented people out there. So like, you have to balance this kind of stuff. Kya, is it something I'm doing for long term learning? So ठीक है, go for it. Like then you just have to know कि यार अच्छा, maybe a year or two to get in demand. As like Sama said, yeah, you don't know how in demand volume में कितनी होगी उसकी industry के अंदर. So yeah, this is a trade off you'll have to make in terms of technology. And also like the question Mohammed Ali pucha hai, but what do you mean by technology again? Because again, what we're talking about is like mostly like this software technology, software and ये हो. अगर hardware so isn't like हमारा जो दोस्त है मुझे आता, so like he's into semiconductors, well, that's a whole different form of tech. So you have to like kind of specify okay, what do you mean by tech? Like it's a very catch-all term is for everything now. So उसको थोड़ा सा specify karo, and then I think build from there. And also someone pointed out that we're looking, can't find Temur on LinkedIn. I doubt you'll find Temur anywhere online. ठीक है, he is a He's a recluse. ghost. And हाँ, so उसने जो email अपना ऊपर दिया है, I think that is the best place to contact him. You will probably not find anything about him online. So maybe, or just ask us and we have some good stories. अली, अगर आप कॉल पे हो, अगर और एक मोहम्मद अली तो ड्रॉप हो गए हैं, तो आई थिंक वो Hmm. वही होंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो उनका अपना, तो एनी अगर, Possible. हाँ आप अनम्यूट कर सकते हो, जो हसान पूछ रहे हैं कि क्लैरिफाई कर सको व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय टेक. आई थिंक व्हाट ही मीन्स बाय टेक इज जो टिपिकल सी सी प्लस प्लस जावा जो लैंग्वेज पीएचपी वगैरह चल रही हैं उससे रिलेटेड था. तो आई थिंक मूविंग ऑन, इफ अली इज. जस्ट वन मोर थिंग, सॉरी उमेर. अगर जो मैंने लिंक शेयर किया उसके अंदर आप पे ने 2022 ग्लोबल फ्रीलांसर इनकम रिपोर्ट देखें, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड्स का पता चल जाएगा, व्हाट्स गोइंग अप, व्हाट्स गोइंग डाउन, व्हाट्स पेइंग मोर एंड सो ऑन. इट्स अ वेरी वेरी गुड रिपोर्ट. ये हर साल इनकी आती है. थैंक यू. तो जिस तरह वो हसान ने भी बोला था कि सिर्फ मार्केट नहीं, आप जिस इंडस्ट्री में भी जाना चाह रहे हो ना, उस पर पहले आप अपनी रिसर्च करो, ठीक है, ताकि फिर आपको पहले पता चल सके कि कौन सी चीज़ इन डिमांड है. आप एक ऐसी चीज़ में घुस जाओ जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर 6 महीने का 6 साल भी आप लगे रहेंगे तो आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. तो डू योर रिसर्च फर्स्ट, ठीक है, जो हम नहीं पसंद करते जीके से इतना, बट आई थिंक इस इंडस्ट्री में आपको अपनी ऑडियंस को थोड़ा देख के करना पड़ना है. थिंक हसान, नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल हादी का है, आप ये आपसे स्टार्ट करते हैं. You're talking about finance marketing. How can I learn this? I think YouTube is not enough for this. Is there any other firm or company in Pakistan that offer any internship in particular field? Fine. I'm not sure what you mean by finance marketing. I think you mean paid digital marketing, because I was talking about paid digital marketing. That's a different thing. Finance marketing. So I'm currently working for a finance company and marketing for them, and that is a whole host different than actual digital marketing. So what those different things. If you want to learn about finance to market finance, wo I think slightly different things there. But if you're talking about learning how like digital marketing itself, you don't need YouTube. I think every platform has its own has its own training system. So Google, think with Google has its own like they'll talk you through how to monetize your website, how to monetize anything on the internet, digital ads, paid ads, जो आपको आती हैं, phone पे ads आते हैं. They've got different like all of their tools, all of the technology, सारा backend पे जो हो रहा होता है वो करना होता है. And then especially if you want to learn about it, HubSpot is a marketing company that has a huge amount of marketing resource, inbound, outbound, sales. If you looking to move into like a sales related job, digital, तो वो उन्होंने सब कुछ cover किया हुआ है. So I have to just type that down for anyone. Uh,
easy for everyone. So and if you're looking into LinkedIn, LinkedIn has its own university. LinkedIn, because they have their own like so-called proprietary algorithms उनके होते हैं. So Meta, like Facebook has its own, Instagram has its own, Snapchat has its own, TikTok has its own. सारों के separate. There's no single, like YouTube पे आपको लोग like everyone give you hacks. They'll say, oh हम ये कर रहे हैं, this is what works for us. But overall, like if you want to learn, the first thing you do is you go to that tool and you learn what they have to teach you. Then you go to some place like HubSpot and you see क्या what the industry says about it. Industry के अपने reviews क्या, and then you have a best of care company like that tool. What is it recommending itself, and what are industry professionals doing at the moment? And this is something you have to do like every 2-3 months, because so as of like though like almost September, mid September, Google made a very big change to how search engine like search results work, and everyone was left scrambling to change it, because पहले like जिस तरह websites rank होती थी, there was a slightly different way. अब उन्होंने उसको कहा to make it like more useful, so they've changed the weightage of how headings work, how आपके जो keywords होते हैं उसमें चलते हैं. They just silently changed it, and so everyone scrambled. So yeah, if you're looking to like do digital marketing, you have to be on top of this like all the time. आपको हर 2 महीने बाद refreshers लेने होंगे, because something's changed on some platform, so you'll have to like run it. uh Internships, if you're looking for internships in Pakistan, dude, a lot, like जितनी like creative agencies हैं, जितने e-commerce की websites हैं, they're always looking for like cheap labor. तो उनकी like उनके career pages के ऊपर जाके देखो. uh I've forgotten उनके नाम, I'm sorry, like there used to be जो बड़े अजीब अजीब नाम होते थे back in my day. I've completely forgotten them. It's been a while since I've been back. लेकिन जितने आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाइक शॉपिस्तान है, which still up they do like corporate e-commerce now, but then you have Daraz and all of them. इनके जितने भी होते हैं बैक एंड पे, they because they heavily rely on कहते हैं paid advertising. So that's somewhere you can look at to see if they're running internship programs, and they probably are. ठीक है उसामा, इसमें आप कुछ ऐड करना है, कोई आपका पास्ट आई डोंट एक्सपीरियंस? थिंक मार्केटिंग वाली बात जो हसन ने की है वो उसमें कुछ ऐड हुआ जा सकता है, बहुत अच्छा उसने ठीक रिप्लाई है, किया. ठीक है। एज फॉर फाइनेंसेस फाइनेंसिंग उसमें मोस्टली वो टैक्स और अकाउंटिंग वाली साइड आ जाती है जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है. दैट्स व्हाट आई मेंशन बिफोर. लेकिन वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास डिग्री हो या आपने डिप्लोमा या कुछ किया हो, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो आपके यूएस क्लाइंट्स होंगे, यूरोप क्लाइंट्स होंगे, आपको थोड़ी सी वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ की लॉज किस तरह से काम करते हैं. मोस्टली वो उस तरह की प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. सो या दैट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है। हाँ, like इंटरनेट पे बैठने का ना ये फायदा आपको हो, like we like GKs like to tend to spend more time on the internet, so make use of it. Like if you're if you're doing something, like if I'm doing content for Europe, so you have to remember Europe के GDPR like data privacy laws are very different, so you can't market to them the way you'd market to people in the US, or you'd market to people here in Australia or even in Pakistan. वहां पर तो आप लोग को CD, वो अब होता है ना that idea कि यार आप हफीज सेंटर जाओ, you buy a DVD of contacts and then you start emailing them, which is a thing. It's a business, like the legit businesses here that do it as well. You can't do that in Europe. You can do that in some other place where Europe has very strict laws against that kind of thing. So you have to know these things, and you can't make mistakes, because if you get blacklisted, you're blacklisted. Then there's no getting around that. एग्जैक्टली exactly. और जिस तरह से आप आजकल पिछले 5-6 साल से आप देख रहे होंगे, कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आते हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट दीज कुकीज़ वगैरह. वो जीडीपीआर जो लॉ पास हुआ था वो लाइक इतनी बुरी चीज़ें हैं. इसमें आप लाइक उनका सर्वर भी आपके यूरोप में होना चाहिए या आपके मुल्क में होना चाहिए. इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो हर इलाके के आपको थोड़ा सा आइस काम करके समझ आ जाएगी चीज़ें. लेकिन इफ़ यू वांट टू गो इनटू फाइनेंस तो वो तो आपको पहले से काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. Like when I started my day job, I had to go like get multiple trainings on how like finance laws work in Australia to actually start doing that job. I wasn't allowed to. I was hired for the job, but I wasn't allowed to do my job till I'd actually done all of that. So yeah, it'll be like if if that's what you're looking for, then you have to do something very different. Like ek to I think you're following the wrong degree, which is fine, because so was I. So that's not an issue. वो जब आप अपनी GK की degree खत्म कर लोगे, then you can maybe look at it, and maybe don't answer that. ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन एहतशाम का, इवन दो ही जस्ट लेफ्ट, बट हम स्टिल जा सकते हैं कि ले सकते हैं, या ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट इसको आई थिंक हम दोबारा लेके रीएम्फेसाइज कर देते हैं. एहतशाम का बेसिकली वही क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी होता है. आई नो हाउ टू टेक प्रोजेक्ट्स ऑन अपवर्क, बट द मेन प्रॉब्लम आई फेस इज आई कांट मैनेज माई टाइम. एनी सजेशंस? सो उसामा, लेट्स स्टार्ट विद यू ऑन दिस वन. आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो?
Honestly, I'm the wrong guy to ask it. I'm the okay. Here's the thing: no, anyone who tells them they're good at managing their time are lying to you. No one manages their time well. Everyone does some things and then they scramble to do everything else. That's just the reality of life. आपके बहुत कुछ होता है. आपने खाना बनाना है. You know, you have laundry to do. You have bill. You know, you have to run around. You have to meet people. ये सब कुछ करना होता है. इसके end पे होता है यार. अच्छा, अब मैंने अपना दूसरा काम कोई करना है. So all of like the thing you have to do is to get you have to get in the जब आप फ्लो में आ जाती हो थोड़ा सा रेगुलरली एक चीज को कर करके देन आप ये काइंड ऑफ छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके आपका बन जाती है एक रूटीन स्केड्यूल बन जाता है सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज शुरू शुरू में sacrifice your like it's just terrible advice but sacrifice your sleep like if you're doing अगर if you're finding कि हर चीज कर रहे हो और end में you haven't done spend some time on Upwork, updating or looking at or placing in bids, what you can do is yeah, sacrifice an hour of sleep and do it. And so you'll be tired for a few days and then you'll learn the punishment of not doing it. It's like वो carrot and stick वाला काम है अपने आप को आप basically force कर रहे हो. So you suffer a few days and then you'll automatically start doing it before earlier. So you're like यार अच्छा so I can't afford to lose my sleep anymore. थोड़ा सा अपने आपको डंडा देना पड़ेगा. And I say this with all the hypocrisy of someone who still can't manage it properly. So this is an ongoing thing. There's no like solution. There's no on-off scare. मैंने ठीक काम कर लिया तो solved हो गया. This is an ongoing thing. Anyone who tells you they're very good at managing time are liars. ये मैं बता सकता हूँ. Hamza. Umer bhai, sorry to chip in if I can for Sure, a sure. minute. Please, please. I can't open my camera because I don't have one on my PC right now. So sorry about that. But just to add on on top of what Sama and Hassan said, it's a bit hard to take their actual names because I'm not used to that. Same here. Yeah, that's Don't all worry. good. I have been Uh, facing this issue from last hour. Yeah, just to add on top, coming from the other side, I'm working with Nokia as a line manager for now, of what, something like 6 years, and I'm regularly coaching my team on how to do their time management. So yeah, what Hassan said, for anyone who tells you that they can manage their time, no matter how much they've spent time working in a professional setting, um, there will be some things that you cannot do. There will be some things that you have to let go of. There will be some things that you have to sacrifice. First few years are always hard for sure. And what Hassan said, you will have to sacrifice your sleep, your comfort to get something. But one thing which I can tell you, which will help you as well, um, whenever you're working on something, the most important thing for you to be able to manage your time in an effective way is to prioritize. And prioritize should be very well defined. आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज आपको क्या benefit देगी, and based on that you have to prioritize. If you have a priority list and if you can manage it very regularly, ये नहीं कि एक दफा बना के छोड़ दिया और उसके बाद उसको कभी देखना नहीं है, या उसके अंदर आपने कभी उसको एडजस्ट नहीं करना, मैंने एक दफा कह दिया था कि ये चीज हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ही रहेगी. That is now how not how it works. It has to be something that is very flexible and it can change very quickly. That is the first thing where you can start managing your time and your schedule. उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं किस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ. इस चीज़ के ऊपर मैं 1 घंटा रोजाना लगाने की बजाय एक दफा बैठ के अगर मैं इसके ऊपर 8 घंटे लगा दूंगा तो फिर मुझे दिन में इसके ऊपर 10 मिनट लगाने पड़ेंगे. दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू बिल्ड इनटू योर ओन इकोसिस्टम. एंड दिस इज वेरी इंडिविजुअल. कोई आपको एक क्या कहते हैं किताब या एक गोल्डन रूल बुक नहीं दे सकता कि जिसको फॉलो करके आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा. दिस वेरी रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. थैंक यू मैम. Thank you, Hamza, for jumping in. But yeah, Hamza, again, apart from what Hassan and Usama said, Hamza added a really good point. Again, आपको reprioritize again अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में से देखना पड़ता है और कुछ ना कुछ आपको अगेन सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं. आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस. काशिफ, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बेसिकली पोस्टर डिज़ाइनिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग मेरी स्टार्ट है, मतलब अभी शुरू की है. मैं यहाँ पर जीकी में टीम्स के लिए भी काम करता हूँ, बाकी सोसाइटीज़ के लिए भी. लेकिन मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया लास्ट 1 साल से, तो उस पर मतलब ऑर्डर्स नहीं आ रहे. फिर मैंने गिग्स चेंज करवा दिए 2 न्यू लास्ट 3 मंथ से. उस पर भी मतलब रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, मतलब वो लोग देखते हैं, लेकिन ऑर्डर्स का कुछ अता पता नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ऑर्डर्स किस तरह मिल सकते हैं, अगर आपकी सजेशन हो. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इस तरह पॉसिबल है कि हम कोई अच्छी कंपनी को रीच करें,
मतलब हम एक एक कंपनी हमें हायर कर रहे हैं, मतलब उनके हफ्ते का एक काम होता है एक पोस्टर डिजाइन करना, या उनकी कंपनी के लिए कोई वीडियो एडिट करना, इस तरह। ठीक है, तो उसामा आपसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। यार लास्ट साल फर्स्ट ऑफ से, ऑल हाँ। तो हाँ, सॉरी। वेट। फाइवर का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छा नहीं बता सकूंगा कि वहाँ पे आप कैसे प्रोजेक्ट्स पकड़ें। लेकिन आप कह रहे हैं आप पोस्टर डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो आई यूज्ड टू बी अ डिज़ाइनर फॉर अ वाइल। सीन ये होता है कि मैंने आपका काम नहीं देखा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रखें अपना काम इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। और इम्प्रूव का क्या मतलब है, आप देखें फेमस डिज़ाइनर्स को जाके देखें, फेमस पोस्टर्स को जाके देखें, और अपने काम को उससे कंपेयर करें। दिस इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी, ठीक है। आप जब आपका लेवल कंसिडरेबली इंप्रूव हो चुका होगा ना, तो फिर काम खुद आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जाके अपने ड्रिबल पे अकाउंट बनाएं, या इस तरह की जो पोर्टफोलियो, मुझे नहीं पता आजकल कौन सी साइट्स यूज़ होती हैं। हमारे ज़माने में फ्लिकर होती थी, डिविएंट आर्ट होती थी, तो अब उन आर्ट पे स्टेशन, अकाउंट। आर्ट स्टेशन बीच में आ गया हुआ है, थर्ड पार्टी देयर। राइट। तो ये आपका पोर्टफोलियो आप कहीं ऑनलाइन लगाएं फाइवर के अलावा, ठीक है। ऑनलाइन लगाएं, फिर आप अपने लिंक्डइन वगैरह पे लगाएं, वहाँ पे करें, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना शुरू करें, लोगों को ऑफर देम टू वर्क फॉर फ्री, ठीक है। काम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने काम अपना इम्प्रूव करना है, और साथ साथ इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश, ये मैं जनरली बता रहा हूँ, कि इंग्लिश इज़ वन थिंग जो फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश वगैरह की जो फ्रीलांसर्स होते हैं, हम पाकिस्तानियों की इंग्लिश उनसे बेहतर होती है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूएस यूरोप के लिए अगर आपने काम करना है, तो एक वो बहुत आपको आगे कर देगी। सेकेंडली डिज़ाइन की क्वालिटी, डिज़ाइन की, जब आप काम देखेंगे ना दूसरों का, प्रोफेशनल्स का, तो आपको अभी क्योंकि कई लोग होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका काम अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ होता है, दे नॉट कॉन्शियस कि उनका काम अच्छा है या नहीं। मैं जब डिज़ाइनर था और जब मैं हायरिंग कर रहा होता था, मुझे बहुत लोग आए थे, उनका बहुत ज़्यादा काम होता था, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन काम कोई इतना ख़ास नहीं होता था, और उनको पता भी नहीं होता था कि उनके मसला क्या है काम में। ब्राइट कलर्स होते थे और वो क्लटर्ड सब कुछ होता था, ठीक है। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। काम इंप्रूव करेंगे, प्रोजेक्ट्स आप अपवर्क पे जाके अप्लाई करें, वहाँ पे फाइवर पे लगे रहें, करते रहें, काम आपका अच्छा होगा, आपको लोग मिलेंगे। हो सकता है शुरू में ना मिले, पर आप करते रहेंगे तो आपको इसमें मिलेंगे। लिंक्डइन वगैरह पे अप्लाई करें। सेकेंडली आपने पूछा कंपनीज़ के बारे में, तो येस एब्सोल्युटली आप कंपनीज़ को खुद से पिच कर सकते हैं। जब आपका काम अच्छा होगा, पोर्टफोलियो आपके पास बना होगा ना काफ़ी सारा, तो आप दिखा सकेंगे मैंने ये काम किया। डिज़ाइन की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बगैर काम एक्चुअल में मिले आप काम बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि मैंने ये किया, और पीपल विल हैप्पीली पे यू वंस यू गुड। प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन इस पे हैं तो मुझे बताएं। जी एक क्लियर हो गया, थैंक यू। मैंने हसन। एक मैं इसमें चीज ऐड हाँ कर दूं कि वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू आर डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव इज यू have to be really open to like people critiquing the hell out of your work. Like it's like I only dabble in design jahan mujhe karna hota. My priority is writing because that's what I specialized in. But I've had to do some design work, and क्या writing में critique लोग करते हैं आपको। एक तो ये कि वो वाली बात है कि if your English is bad somewhere, you will instantly be written off. सो पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, पुट एवरीथिंग टू ग्रामरली, मेक श्योर कोई वो बेसिक मिस्टेक्स ना वो, दैट्स जस्ट गोइंग टू किल इट फॉर यू इंस्टेंटली। बट द अदर थिंग इज कि वो जो सामने की कि यार get critique, like get feed, look at what industry designers are doing, like look at what's happening in those design spaces. Like if you're doing like minimalism में जा रहे हो, तो देखो कि यार Google का like what's material you, why are they doing something that way, like all of those things, वो constant knowledge तो है, but then look at your work and criticize your own work। यार जो ये मैंने किया है, is this meeting the kind of aesthetic that I'm targeting? If you're making posters, आजकल posters, if you're making movie posters, आजकल movie posters का क्या डिजाइन क्या वो है, like 2006 से 2013 तक it was all blue orange, सेंटर है। आजकल क्या हो गया भाई, इट्स सेंटर में हीरो होता है, इसके देखिए पूरे कैस्केडिंग आर्म्स होते हैं। मार्वल हैज इट्स ओन जो पोस्टर डिजाइन उनकी एस्थेटिक है, दे हैव अ वेरी डिफरेंट वन। A24 की अपनी है, लाइक ऑल ऑफ दीज कंपनीज हैव देयर ओन एस्थेटिक। सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट वेयर आर यू टारगेटिंग, लाइक ये अ लॉट ऑफ जो एक चीज जो आई थिंक हमारे में काफी लैक करती है, and that is media literacy, which like basically communications के लिए एक बड़ा important part होता है media literacy, which is questioning and understanding why media is a certain way, why news is presented a certain way, why
न्यूज़ पे लोग 5 लोग क्यों चीख रहे होते हैं, why is it happening? It's not कि यार हम जंगली पाकिस्तानी जंगली, no, it's serving a very specific purpose, and that purpose you can see when you look at Fox News, for instance. So it's that kind of media literacy you want to understand कि यार ये film ऐसे क्यों है, why does the hero suffer before they win at the end, why does that happen? Like, this sort of media literacy helps you be more introspective, be more critical of the work you do. So if you've made a poster, you what if you made a poster for a film, आपको कोई बहुत film पसंद है, if you really love a film, यार मैं इसके, I'm going to make a tribute poster. What does it work? Where does it lead the eye? Does your eye follow the character? Does your eye follow the typography? What is happening over there? So you have to be able to ask yourself those questions, answer those questions, and get people to tell you these things. And unfortunately, Hamari, like in this day and age, like because social media, you're just constantly bombarded with opinions and not critical thinking. तो ये हम एक चीज skill lose करें. Media literacy is something that we all should really try to अपनी field में भी, because well, like even if you're in academics के अंदर भी एक problem अब आ गई है where there's skew, like sample size skew कर रहे होते हैं अपनी study का, उसको present किसी तरह कर रहे होते हैं, actual data कुछ और कह रहा होता है. So it's that kind of literacy that you need to understand, and this extends beyond design. Tech के अंदर भी कार्य होती है. Like Uber says, oh, we are a billion-dollar company, but they पिछले क्वार्टर में $6.8 billion की लॉस उन्होंने शो की है. So what's happening there? You have to understand कि यार क्या हो वहां पर हो रहा है. Elon Musk is, guru for so many people, but what is he actually doing with being an idiot on Twitter? क्या what's happening there? What does he do? So yeah, it's those kind of things that you need to understand. क्या ये क्या हो रहा है? This kind of literacy will help you not just like in your work, but it'll actually help you beyond that and understand कि यार अच्छा what kind of trends are happening and why are they happening. If you want to get into, so say किसी ने पीछे वेब थ्री का पूछा, so if you're looking to go into वेब थ्री के बहुत issues है, like the web 3 is a new technology. उसके सबसे बड़े issues क्या हैं जी कि NFT, this idea of AI art, NFTs and authorship and IP ownership of original art, कौन कर रहा है? These are things you have to ask. You can't just go willy nilly say कि यार अच्छा I'm going to make, I like an artist, AI के अंदर मैंने इसका samples throw किए, अपनी चीज बना ली, it's mine. क्यों? Why does it not work? Like it's those kind of things you have to ask yourself to increase your understanding of like how the world works. It's क्योंकि when you're doing something आप अपनी एक space में जाके करते हो, if you're making something, मैंने बैठ के like I was working on uh, this creative brief for a client. This is about 2-3 years ago. ठीक है, उन्होंने काम दे दिया, मैंने कहा ठीक है मैं 2 हफ्ते में करके दे दूंगा. 2 हफ्ते में मैंने करके उनको दे दिया, but the problem was कि in literally in those 2 weeks what they wanted done for Facebook completely changed, because Facebook ने अपने जो business suite था उसको change करके meta business suite something something करके बनाया था, उसकी beta testing start कर ली थी. So they completely revamped how that thing worked, and because मैंने अपने आप को completely cut off किया था what was happening, 2 हफ्ते का काम completely useless. So you like with that kind of awareness you have to keep on all the time. Okay, ranted long enough on this. But ठीक है, थैंक यू सम, थैंक यू सम. काशिफ आपका, होपफुली आई थिंक पेशेंस इज़ द की. आपको कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रह के पेशेंस से इसको पुश करते रहना है. जिस सामा ने बताया प्लेटफॉर्म थोड़े आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे फोकस ना करो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन. और अगेन, और दूसरा जो आपको क्वेश्चन है रीचिंग आउट पे, आपको कोई बंदा क्या मैक्सिमम नो ही कह सकता है ना, तो देर इज़ नो हार्म इन रीचिंग आउट. आप लिंक्डइन पे आपको कहीं भी आपको नज़र आ रहा है दे आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, जस्ट गो एंड रीच आउट और बताओ कि दिस इज़ अगेन पोर्टफोलियो. अगेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिस तरह उसामा ने कहा, पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और वर्क रेडी होना चाहिए जिसको देख के डिसाइड कर सकें. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जस्ट बी पेशेंट और कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह आपको and जल्दी. even if it's writing, even if it's like anything else, website design है जो भी कर रहे हो, portfolio अपना बना के रखो. Like जब मैं like when I didn't have an actual paid gig, I just wrote things for myself and I just sent them in and said, oh, and okay, and ये सेंसर कर देना बाद में करना हुआ, but थोड़ा थोड़ा झूठ बोल देना चाहिए, अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है. सो व्हेन आई डिडंट हैव अ जॉब आई लाइड, ओ ये किसी उस मैगजीन में छपी है, उसमें नहीं नहीं छपी थी, मैंने खुद लिखी थी. एंड इट दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो यू लाइक हैव टू लाई, थोड़ा थोड़ा करना होता है. ये समझना, यू हैव टू नो व्हेन टू डू इट एंड व्हेन नॉट टू डू इट. बाय द वे, यू हैव टू डू इट इन अ वे कि कोई फॉरन इमीडिएटली वेरीफाई ना कर सके उसको. सो व्हेन लाइक दिस इज लाइक 10 years ago or something. So इस तरह की छोटी छोटी चीजें सब कुछ करना होता है. यू हैव टू डू एवरीथिंग. पैसे कमाने हर चीज जायज होती है उसमें, नॉट एवरीथिंग बट I would like to थोड़ा like थोड़ा पे थोड़ा सा मसला मॉडिफाई है. मैं ये करूँगा इस तरह से. पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है
कि वेल पाकिस्तानियों को अगर आप बोल दोगे कि थोड़ा सा झूठ बोलना होगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मसला हो जाएगा. Yeah, तो that आई वुड लाइक टू I was रीफ्रेम going इट to. एज सच के स्टे ऑनेस्ट लेकिन बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. अब That's what it हमारी is. बैच Okay, की he's okay. Dekho, as you can understand, the more sensible of the two of us is obviously Osama. What I was trying to say was, कि हाँ, you have to exude confidence. Okay, if I didn't have a paid gig, but I showed, like, I lied obviously a bit, but I was showing confidence. Yeah, look, I'm good enough to be published. Here's my work, read it. The idea was क्या जो चीज published नहीं भी हुई वो पढ़ें. It was good enough. It wasn't published, but they read it. It was good enough, so it could have clearly been published. So the confidence was there. It's obviously like a white lie thing, and it's okay. Like एब्सोल्युटली. Sam is the sensible one, so he'll phrase it better, obviously. But that's एक्चुअली basically the द point. थिंग इज कि हम हम्बल होंगे, आप सब कुछ होगा, काम शायद ना भी किया हो, अंदर से डर भी लगे और नर्वस भी हो, हम सबको लगता होता है. Yeah. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो दूसरा बंदा जो पैसे आपको दे रहा है वो आपको क्यों पैसे देगा, बोले कि भाई ये खुद छोड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकता. कॉन्फिडेंस इज वन थिंग. एक इंग्लिश आपकी अच्छी हो और कॉन्फिडेंस आपका हो तो आप टैलेंटेड बनते से भी आगे चले जाओगे. वो आप वो भी पीछे वो कंफ्यूज होगा, सब कुछ होगा. कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और And And कॉन्फिडेंस sorry, it's काम आहिस्ता आहिस्ता भी आएगा अगर आप फ्री काम करोगे, मे बी कम पे पे काम करोगे. just to add on अगेन top, that is not only for freelancing, that is Exactly. for everything in your एवरीथिंग. I future. was about to आपको say the same normal thing. job पे भी ये बहुत जरूरी है. Yeah. Confidence is the key. confidence. झूठ बोलना नहीं, confidence. Confidence. हाँ. Just to clarify. And एक उसमें just to add on one. God, I lost my train of thought there, but it's basically जो इंग्लिश वाली बात. आई एम जस्ट गोना ड्राइव इट होम. अनफॉर्चुनेट है, लाइक दिस इज द रियलिटी कि यू हैव टू हैव गुड इंग्लिश, ठीक है, एंड नॉट स्पोकन, ठीक है. स्पोकन लाइक व्हेन यू स्पीक टू अ गोरा, लाइक यो दिस एक्सेंट, इट साउंड लाइक आप पता नहीं किस जो है कहाँ से उठ के आ गए, विच इज जस्ट टेरेबल, ठीक है. you'll always feel it when you're talking to a white person और वो अपने एक्सेंट में बात करते हैं, you will always feel inferior. That's just how, unfortunately, how colonization and history works. Like that's just a reality. So you उसको ओवरकम कर लेना वो कोई मसला नहीं. जितनी मर्जी पूरी टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, दैट्स perfectly fine. उसका कुछ नहीं. You'll feel bad about it. You'll feel यार ओके क्या मैं बोल रहा हूँ, उनका कितना sophisticated accent है, but that's just because, and that's where the media literacy comes in, because that's because we've grown up watching Hollywood. We think, oh, that's how English should sound. No, it shouldn't. It sounds however you want to make it sound. So English, एब्सोल्युटली. आपकी spoken टूटी फूटी हो कोई मसला नहीं. The written stuff must not have mistakes. There are to if you're using Microsoft Word, spell check everything, grammar check everything. Google Docs use करो करो. आपके हर वेब ब्राउजर पे Grammarly का plugin installed होना चाहिए. Like those, I can't stress this enough. If your CV has a mistake, you will not get a job. It's that simple. And it's unfortunate. Like मैं पाकिस्तान में जब काम कर रहा था, half the CVs I would reject because there were typos in it. Just it's not going to work, guys. Please be very very careful about that. Like, and especially if you're pitching to एक मैं बात बताऊँ, and this is not for Europe. This is specifically for Australia. ठीक है? If you're targeting like Australia and New Zealand, people here don't know how to spell. They don't. ठीक है? उनको आप spelling किस चीज के पूछो, गोरों को, they don't know, like they don't know their own language at all. But what they're very good at is running things through spell checks and running things through plagiarism checks. There are tools that do this. They will run it through that. उन्हें खुद कुछ नहीं आता, वो उसमें run करेंगे, एक mistake आ गई, you are out. So that's why you just there's just no getting around that fact. इसलिए मैं इतना उसको repeatedly stress कर रहा हूँ, you cannot get past that. And उसका एक अच्छा तरीका है कि जो अपनी assignments कर रहे होते हैं, if you, I don't know if you're doing your own assignments, run those spell checks through that. Uh, there's this tool called Turn It In or Turn Me In, I think. I think that's the plagiarism checking tool जो होता है. It has a free version. उस पे अपनी चीजें डाल के देखो कि तुम लोगों ने कितना विकिपीडिया से छापा मारा है. Is it catchable? Is it not? ठीक है, डू इट योरसेल्फ. अपने आप को टेस्ट योरसेल्फ, केयर टू टेस्ट योरसेल्फ टू डू बेटर. ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें करोगे तो यू विल स्लोली स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ केयर. हाउ कैन आई मेक श्योर कि एवरीथिंग आई एम राइटिंग इज स्पॉट ऑन. तो ये दैट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पोकन का प्लीज उसकी टेंशन ना लिया करो. इट्स जस्ट हाउ इट इज. यू कांट गेट बियॉन्ड दैट. ठीक है. ऑल्दो आई वुड से, अच्छा 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ और हसन मुझे ऑस्ट्रेलियन के एक्सेंट अभी तक नहीं समझ आता. नहीं सर, इट्स जस्ट द वर्स्ट एक्सेंट. इट्स I've been here 5 years. I can't half the things they say. मुझे कुछ पता नहीं क्या कह रहे होते हैं. I'm like, yeah, all good, all good. Their accents are terrible. ठीक है? Their accents are terrible. So मीटिंग पे you वो बोल रहे होते हैं, आपको बताया तो था. मैंने कहा हाँ हाँ या सॉरी आई फॉरगॉट. मुझे समझ नहीं आई होती क्या बोला उन्होंने. आज के मैच में बट देखो, every time an Australian comes on, कहते हैं माइकल क्लार्क आया था शायद बीच में कमेंट्री करने. I have no idea उसने क्या बोला था बीच में.
ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट So, लास्ट आई थिंक sorry, फिफ्थ। Umair, one हाँ more thing. हाँ। While absolutely written English is extremely important, it sets you apart. आपको like आपकी CV और जो भी है वो आगे हो जाएगी उसकी वजह से. On the other hand, अगर आप साथ spoken भी improve कर लो, and like Hasan said, इसमें accent आने की जरूरत नहीं है, अपना पाकिस्तानी accent रखो, जो मर्जी accent रखो, बस अगर आप confidently fluently बोल सकते हो ना, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप अपना एक वीडियो कवर लेटर बनाओ, जिसको पिच कर रहे हो, आप उस बंदे की वीडियो बनाओ, अपनी रिकॉर्डिंग करो और आगे भेजो, तो इट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर सीरीज. अगर आपकी थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स कम भी हैं तो दिस विल सेट यू अपार्ट एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट एज. ट्रू ट्रू। एंड उसमें एक्चुअली मेरे इन माय मास्टर्स लाइक एक्चुअली आई हैड टू स्टडी दिस, सो हमने पढ़ा था कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्पीकिंग इज which I do a lot. If you've noticed, I do a lot of that, and it's not good. Like I've forgotten what I learned anyways. टोस्ट But I'll मास्टर्स. tell you, hypocrisy at its finest, as always. तो उसका ये होता है कि there's some ways to get around. एक तो ये कि slow down the speed at which you talk. आप थोड़ा सा आहिस्ता बोलो. It gives your brain time to catch up. आप आराम से बोल सकते हो. You don't have to you don't have to do thinking voices. So it's the thinking voices that often catch us out, because जब हम वो सोचना की कोशिश करते हैं, our brains switch from Urdu to English to Urdu, and when that happens, then आपकी spoken जो है वो टूट जाएगी. So it's like yeah, it's just thing. The video resume is a very good idea. Like I've never done that. What I prefer doing is कि मैं webcam on करता था, and I'd put on like my favorite book or something, and I'd just start reading to myself. And it's horrible. If I have to listen to myself, तो मैं like I feel like stabbing my ears, that I hate my sound of my own voice. In recording, it's a psychological thing, by the way. Check someone read up on this if they're interested. Okay, the sound of your own recorded voice just makes you cringe. Uh, but ये चीज करना पड़ेगी, like fluency. And it's the confidence, not even fluency, it's confidence. If you're speaking slowly and surely, if you're not making mistakes, it shows confidence. Fluent हो या ना हो यार, आप चाहे 10 लफ्जों की vocabulary लो, आप उसी को बार बार यूज कर रहे हो, so long as you can do it in a confident manner, I think you'll get by. And that is something जो आपको experience के साथ आएगा. Like इसको don't stress too much about it, work on it as you start entering your professional fields. तो वो ठोकरें खा खा के खुद ही बेहतर हो जाता है. उसको स्पीड अप आप कर सकते हो, बट द बेस्ट लर्निंग इज बाय डूइंग. ये आई थिंक यू कैन समराइज दिस यार. फ्रीलांसिंग की समरी ये है कि यू लर्न बाय डूइंग, देयर इज जस्ट नो वे अराउंड इट. हाँ नहीं, उसमें आई थिंक वो जो स्पोकन का इस वजह से भी और राइटिंग स्पोकन दोनों इस वजह से भी अब बहुत, अगेन कोविड के जहाँ इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान में अब रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें आपका अगर बाहर यूएस में सारों को लोगों को पता चल गया इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हमें सस्ते लोग मिल रहे हैं तो हम इतना क्यों पे करें, तो पाकिस्तान में रिमोट जॉब्स, अगेन प्रॉपर जॉब्स, नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, प्रॉपर जॉब्स यूएस में जो कि यूएसडी में भी पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब आपका जब सब कुछ कंपनी क्लाइंट सब कुछ यूएस में है तो आपकी इतनी होनी चाहिए, आप उनसे रिटर्न में और लिसनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट आप उनसे इतना उनको आपकी बात समझ आ जाए, आपको उनकी बात समझ आ जाए, तो ये ज़रूरी है। नॉट फ्रॉम द फ्रीलांसिंग परस्पेक्टिव, जनरल लाइफ में भी जॉब्स क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं कोविड के बाद रिमोट, तो इट्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, थिंक लास्ट 13 मिनट्स, अगेन एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स? हाँ यार, कोई नो क्वेश्चन इज टू स्टूपिड. लाइक द ओनली स्टूपिड क्वेश्चन इज द वन यू डिडंट आस्क. जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, लाइक क्या करना है, कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर करना है, लाइक ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आस्क अस. अभी जवाब नहीं तो एटलीस्ट आई आस्क यू टू कांटेक्ट मी ऑन लिंक्डइन लेटर ऑन, सो आई कैन, लाइक स्पेशली इफ यू डूइंग कंटेंट वर्क और लाइक some sort of like website marketing work, or like Osama will, like he'll give you a comprehensive answer to this, but I'll give you like a, like अच्छा यार ये छोटी छोटी मोटी चीजें करके शुरू करना शुरू करो. If you want like really detailed, like well thought of answers जो कि आपको अगले 5 साल के लिए busy रखेंगे, वो Osama can help you with that. Like absolutely. मैं if you've got like ADHD brain, आप मेरे पास आ जाओ तो मैं 10 मिनट में आपको कुछ बता दूंगा, फिर भूल जाऊंगा. अच्छा, वन मोर थिंग मैंने लिखी हुई थी, सॉरी. फ्रीलांस का एक अपार्ट फ्रॉम लाइक अर्निंग इन डॉलर्स एक्सेट्रा, इसका एक और बहुत बड़ा एज ये है कि व्हेन यू गो आउट एंड यू हैव अ जॉब, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली कट जाएगा. फ्रीलांसिंग में अब तक देयर वाज नो टैक्स ऑन इट, और अब उन्होंने लगाया तो 0.25% है. सो लाइक यू barely have to pay anything in taxes. So this is one major advantage. हाँ गाइस, आस्क मी.
जब हर महीने टैक्स कट के आती है ना पे, वो इतना मेजर चंक आता है तो बंदे को वैसे ही ना मूड ख़राब हो जाता है यार, इतना टैक्स कट रहा है। तो ये हाँ, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट है आपको, आई थिंक अभी लगा है। आई थिंक ये न्यू गवर्नमेंट लास्ट टाइम आई थिंक फ्री हो गया था, तो लेकिन स्टिल नहीं, ज़ीरो। लास्ट 20 ईयर्स से फ्री था। लास्ट अभी 20 आहिस्ते आहिस्ता वो लगाएंगे, पर इस लगाएंगे। वक्त बहुत कम है। तो हाँ, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जितने पैसे हैं आपके उतने सारे आ रहे हैं, पर 0.02 पॉइंट जो भी ये साउंड आ रहे हैं विच इज़ कुछ भी नहीं नथिंग, हाँ बनता। कुछ भी नहीं बनता। हाँ, ओ एंड एक और चीज, हाँ, स्पीकिंग ऑफ टैक्सेस, इफ एनी लाइक अभी तो लाइक सिंस यू आर ऑल अंडर ग्रेड, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड कोई ना कोई बाहर अब्रॉड होगा, प्लीज ये टैक्स चीज सीख लो अभी से। लाइक दिस इज समथिंग जो हम बहुत लेट सीखते हैं इन आवर लाइव्स, प्लीज लर्न दिस नाउ, because if you're a freelancer abroad specifically, the amount of paperwork you have to do is unbelievable. Like I have to keep logs of कितने घंटे मैं इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, कौन सी कुर्सी इस्तेमाल करता हूँ, लाइक बिजली कितनी देर होती है, घंटे कौन से, कमरे कमरे का साइज क्या है मेरे, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स का फैक्टर इनटू योर टैक्स यहाँ पर। एंड इट मे बी जस्ट देयर, बट आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट रिडिकुलस। बट ये आपने जो है जरूर, लाइक दीज आर थिंग्स यू हैव टू लर्न एज क्विकली एज पॉसिबल। हम लाइक इट्स शेमफुल, हम लोग कितने इल प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज के लिए। सो ये इट्स समथिंग दैट यू रियली नीड टू लर्न। एक जो मुझे भी किसी ने मैसेज किया है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई डोंट नो। लास्ट 10 मिनट्स आई थिंक क्वेश्चंस काफ़ी हो गए हैं, जो आई थिंक मैं कहता हूँ दोनों अपने अपने जितने भी फ्रीलांस है कैरियर की एक एक फ़नी स्टोरी बता दो, ताकि बंदों को, बच्चों को ये भी लगे कि सीरियस सीरियस काम नहीं है, थोड़े फ़नी इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। तो हु वांना गो फर्स्ट? Uh, okay, like so I'll start. So जब मैं ऑस्ट्रेलिया में I started, I'm still basically I do writing for some of the universities here, उनके alumni pages के लिए, careers pages के लिए, and so I was asked to write about uh, the migrant experience. क्या I'm an international student, तो अगर कोई और international student बनना चाहता है उसके लिए क्या, what are good guidelines and tips and tricks for it, and मैंने कर दिया unfortunately, as a lot of my friends here can tell you, I have issues with colonization and history and how things work in this world. तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा rant कर दिया कि यार पैसों का मसला होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी और तरीके से मुल्क में जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट बाहर जाना इज़ द वर्स्ट डिसीजन यू कैन मेक फाइनेंशियली. It is one of the worst decisions you'll make financially, if you're going anywhere that is not fully funded for you. So I wrote a lot about it, and I thought it was a very good piece. एंड 2 हफ्ते बाद मुझे यूनिवर्सिटी में मेरे एडिटर से कॉल आई, एंड शी सेड, hey look, it's a really great piece, but please understand I can't pass this on. Both you and I need to make money, and we can't afford to lose our jobs. And what you have written is basically, you've said ke don't come here because universities are stealing your money from you, and you're better off just learning those things on your own. And unfortunately, I had to read that 2 more times before it was accepted. But and I think I was paid like $2,000 for that job, and I was really happy about it. And then उसके अगली दफा जब मुझे उन्होंने contact किया, the same university contact me, they actually wrote in their guidelines के we will not tolerate, the word was tolerate, anti-capitalist or anti-colonial rants in your work. So yeah, I've been known to do this a lot, and unfortunately मेरे यहाँ reputation बन गई है इधर की market में इन चीज़ों के लिए. दैट्स अ गुड वन। उसामा, आपकी साइड से? यार, if there were any funny stories, I don't remember any right now. Lekin, there have been many endearing moments. Uh, I've had a Swiss client visit Pakistan on my wedding. I have like first time मैं एक इंडियन क्लाइंट से काम स्टार्ट किया था, उसकी पूरी टीम इंडियन थी, क्लाइंट इंडियन था, तो मुझे काफ़ी डर लगा था। ये 2 साल पहले की बात है। लेकिन आई वाज लाइक सो सरप्राइज कि वो अपने इंडियंस को बुरी तरह से डांट रहा होता था, और मेरे साथ उसका इतना अच्छा होता था एटीट्यूड कि लाइक आई वाज लाइक वाह। मुझे होता था कि वो बोलेगा भाई ये, लाइक पहले तो मुझे था इंडिया से वो हायर कर रहे हैं तो व्हाई वुड ही पे मी दिस मच एज आई एम चार्जिंग। लेकिन लाइक हसान सेड बिफोर, लाइक जितने ज़्यादा हाई पेइंग होते हैं उतना अच्छा भी एटीट्यूड करते हैं, और प्लस ऑनलाइन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, लाइक पीपल आर नाइस एवरीवेयर, और बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं मेरे, लाइक इट्स एन अमेजिंग टाइम। सो ठीक है उसामा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थिंक सुहेब ने काफ़ी लंबा कमेंट अगेन वही किया है कि अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली HM 101 102 में थोड़ी सी वो कोशिश करते हैं बच्चों को प्रेजेंटेशन वगैरह से अगेन, बट यस इट कैन डेफिनेटली बी It's इम्प्रूव्ड। हाँ,
it's okay, चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बात है तो HM 101 में हमारे हमारे HM 101 के मिड टर्म में देयर वाज अ पंचुएट दैट पैराग्राफ या पंचुएट दैट लाइन वाला एक क्वेश्चन आया था, अगर किसी को याद हो. आई डोंट नो इफ एनीवन एनी ऑफ बैचमेट्स रिमेंबर. आई Yes. रिमेंबर. हाँ, सो वी हैड अ क्वेश्चन. सो आई उसके जवाब में मैंने लिखा था दिस क्वेश्चन इज बीनीथ मी. एंड आई गॉट कॉल्ड इन एंड काफी मेरी बेइज्जती उन्होंने की थी. उन्होंने कहा क्या मतलब आके, एंड आई सेड लुक दिस इज, आप ये अगर हम इस तरह करा रहे हो तो यू व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, व्हाट मोहम्मद लाइक वो सोहेब ने एक्चुअली, ओ सोहेब भी आया हुआ है, हाँ. सोहेब ने पॉइंट आउट किया कि यार लाइक इट्स दिस इज अ broader conversation to have कि यार how are we HM मनोन में आप पंचुएशन क्यों सिखा रहे हो. लाइक अगर इस पॉइंट आपके अंडरग्रेड लेवल के ऊपर आपको पंचुएशन नहीं आती, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद योर एजुकेशन सिस्टम बिफोर दैट, or your education system now. If you think a punctuation is an appropriate thing to be teaching at that level, when you should be talking about communication and how you communicate in a corporate environment, how yeah, email, everything, body language, culture, all of these things, hand gestures, which I do a lot of. So all of these things matter, and these things matter a lot more than what you're actually taught in HM 101 102 technical writing, ये वो सब कुछ, ये all of that उसको अगर कराना है तो उसको बहुत एडवांस तरीके से कराना होता है. यहाँ पर जब so when I actually started my masters here, there was no class. उन्होंने सिंपली उन्होंने कहा था कि यार एकेडमिक राइटिंग आपने करनी है, जाओ सीखो. एंड देयर एक्सपेक्टेशन वाज कि मैं अंडरग्रेड में सीख के आया हूँगा, बिकॉज एवरीवन एल्स न्यू इट. दे सेड सॉरी वी कांट हेल्प यू, आपको हमने दाखिला तो दे दिया बिकॉज यू मेट दोस बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स, बट वी एक्सपेक्ट योर अंडरग्रेड टू हैव टॉट यू हाउ टू डू academic writing. I have no idea what that means, and so I had to learn all of that, and those are things that should be taught. And HM, हमारी जो HM courses थे, they were nothing like that. So अभी I actually don't have an answer for how you can learn this immediately. I might do some thinking on it and actually get back to people. Umair, Maybe if I can remember. let me chip Hamza, in, Hazrat Hassan. हाँ. Yeah, one thing from my side to say, communication is not like मैंने पहले भी कहा था, it's not something that you can uh, learn from a book or something. Even 15 years, 20 years down the line, for going towards higher management positions, हम मेरी सारी trainings from the company itself, which are like 10,000 euro, 20,000 euro paid trainings by the company, those are all targeted on communication, because to understand someone what they're asking, what exactly will help them, because someone what they're asking for might not be exactly what they need. Digging that out and trying to communicate it back to them as well, in a proper way, that is a technique that you will learn for the rest of your lives. You will never be able to master it completely, because चीजें बदलती रहती हैं, the environment changes, you have to learn new things, and there is a lot over there from human psychology which you have to understand to do that. So what I would just say is, for you guys, HM courses, yes, they are not so good, they're not so targeted, but what you can do is start speaking in some, जो आपके कोई क्या कहते हैं सोसाइटीज के इवेंट्स हैं, कुछ हैं, टेक लीड्स इन प्रोजेक्ट्स, ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर टीम. अगर आपके 4 बंदों की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसमें भी इफ यू आर टॉकिंग, you can start building that confidence and that flow and that knowledge. Listen to speeches. TEDx is a very good resource to watch. They have good content over there, and if you're not only focusing on the content, you can focus on the way that those people are delivering the content. That helps you build your personality in during communication as well. So आप बिल्कुल बेसिक से थोड़ी थोड़ी चीजों से शुरू कर सकते हैं, like I mentioned a couple of things, and this will be something that you will be learning over the whole of your career. You will not stop learning that at any point of time. You will not master it completely. Thank you, Hamza. There's Think. an additional thing to it. Like, Mhm. you can extract that kind of meaning from a lot of things you do. If you watch stand-up comedy, it's not just yeah the jokes are funny. You have to understand why they're funny. Like if you can, like it goes back to that idea of like being critical in the media you consume, and you can see why they work. उनकी body language क्या कर रही होती है, how they land those jokes. There's a lot of places to learn these kind of things. Audiobooks, if you like fiction, audiobooks is a good way because उसके अंदर if they've got good readers, you can see how they carry drama and tension. There's a lot of ways of doing. There's no one right and wrong way. It's just make sure that as broad a spectrum of communication that you can consume
in a meaningful way, not just यार podcast लगा दी और कुछ करने शुरू कर दिया. Like also podcasts are the lowest level. Like अभी just my opinion on this. Podcasts are the lowest level of communication learning. They're just the absolute worst. But if it needs to be like active, कहते हैं someone respected. There's an old show. अभी भी I think चला होता है on BBC called QI. It's an interesting, like, no, it's a knowledge based show, but it's an interesting experiment in how people communicate answers, how they talk, how they think about answers on the fly. And इस तरह की चीजें, there's like stuff you can do beyond just like यार अच्छा हमने HM पढ़ ली या हमने कोई YouTube पे tutorial देख लिया, all of those things. It's being aware. It's just mindless because वो doom scrolling होती है ना फोन पे रात को, Instagram stories है ये देख रहे हो, just वो उसको कम. And that's something I struggle with as well, like उसको कम करना and engaging, finding more meaningful things to consume, and that can actually like improve you as a human being. Like communication is not something कि यार जो career पे करेगा, freelance पे करेगा, none of those things. It's something that just makes you a better person in general. So Yeah. it's something to focus on all the time, ठीक I है think. guys, I think And we are over the time. Umer, Sorry. हाँ. just one maybe last sentence to add. बोले बोले बोले. हमें बहुत एक चीज की आदत होती है कि अगर हमें कोई चीज, अगर आप कोई चीजें देख रहे होगे जो मैंने और हसान ने मेंशन की, हमें एक बहुत आदत होती है, हम कहते हैं हमें चीज पसंद नहीं आई एंड देन वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट विल हेल्प यू improve yourself would be just to ask कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं आई, and then try to figure out how it can be improved. That last part we generally skip, which is quite important and which helps you build um, your own experience and your own improvements. Thank you, man. ठीक है. I think last quick advice, Osama. 1 minute short advice for people who want to do freelancing. One from you, one for Hassan, और guys again students. सलमान हमारे बैच में ने एक आप सबके लिए एक लिंक शेयर किया है. जब भी आपको टाइम मिले, नॉट इट्स पॉडकास्ट हसान के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर दिया, बट स्टिल wrapping this up quickly, Usama, one last minute quick advice for all the So students. yeah, so 1 minute, I would say कि अभी स्टार्ट करें, स्टार्ट राइट नाउ, अपवर्ड जाएं, ज्वाइन करें, फुल डिटेल में पुट योर पोर्टफोलियो ओवर देयर, सब कुछ प्रूफ रीड एवरीथिंग, अपनी पिक्चर अच्छी सी लगाएं, रिसर्च देखें जॉब्स किस टाइप की आ रही हैं, start applying. It might take you days, weeks, months, or even more. Okay? But do not give up. And you will be thankful that you didn't give up. So, yeah, persistence is key over here. At the same time, keep learning, 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 improve your English, improve your skills. And especially if you're in Pakistan, freelancing is amazing. I mean, like, getting a bahir ka income over here, maybe even more than bahir ka income. So, yeah, thank you. Thank you, Usama. Hassan, last few word of Uh, wisdom. हाँ, like one thing that I've learned over like a lot of hardship, because I procrastinate a lot. I'm very lazy. Is do shit work. Like do a huge volume of shit work, and the more shit work you do, the more you look at your shit work, the more you learn to recognize where it's bad. The thing is, you like we're all very bright minds here. You can't doubt that we're all bright minds. We know what's good, what's not good, but in so our mind know that theory, they don't know the practice करके the only way you can actually attain that ideal or that कहते हैं vision of yours is by doing a lot of shit work, so that you can identify the shit work and get better at it, and only then your ambitions can meet your actual quality of work. If you don't do the volume of work, you will not attain whatever. You can be like you can have the loftiest of goals, but if you're not working for them, कुछ भी नहीं होगा. ये वो that idea of क्या यार, oh, magic, none of the billionaires became billionaires overnight. They became billionaires after years and years and years of work and tax loopholes. Like it's volume of work, and then you get somewhere. That's it. You have to do the work. You can't escape it. ठीक है. थैंक यू सो मच हसन. अगेन सलमान, आप कुछ नहीं बोले. सलमान, हमजा, एनी वन लास्ट मिनट टिप फॉर स्टूडेंट्स. I think सारे speakers, everybody is doing an amazing job. और मेरे लिए खुद बड़ी informative थी, even though I'm a batchmate इन लोगों के जाके. But I think they've covered everything related to freelancing और general one-on-ones जो होते हैं, communication होगी, motivation होगी. This is a very good effort, and I think बाकी active participation शायद बाकी किसी और की हो, तो please chip in. थैंक यू सलमान. हमजा, लास्ट मिनट बिफोर वी ड्रॉप. I would just add a side comment. We are your alumni here.
उमेर भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव है. You can always reach us through him. Always glad to help, but please remember कि आपको कोई मदद करने खुद नहीं आएगा. You have to reach out. You have to have a very concrete thing that you want to ask about, and then you can find a million answers from your seniors, your peers, whoever you might be reaching out to. So प्लीज यूज दिस चैनल एज वेल. मैं उमैर के साथ काफी कोशिश करता रहा हूँ. हम लोग यहाँ पे होते हैं, वी आर गैदरिंग लॉट ऑफ पीपल, वी आर ट्राइंग टू build some things and help you guys around. So use this channel of the alumni. That is quite that is a good resource for you. And Umair bhai, thank you for arranging this, and thank you for tolerating our interruptions as well to the panelists. नहीं नहीं, थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग आउट द टाइम, स्पेशली उसामा, हसान, हमजा, सलमान, शुएब, आई थिंक तैमूर भी थे. और अगेन स्टूडेंट्स, वन लास्ट थिंग, अगेन प्लीज़ रीच आउट टू उसामा एंड हसान. ठीक है, जो भी I आपको dropped my गाइडेंस है. LinkedIn somewhere पीछे. हाँ, Please scroll up and find उसामा it. भी I आपको think I मिल did. जाएगा. अगेन जस्ट मेक श्योर, अगेन ये भी इंसान है, इनकी भी पर्सनल लाइफ है, इनकी भी फैमिली लाइफ है. वो वाला आपके बस बड़ी नहीं है कि आप मैसेज करेंगे और फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा. जस्ट गिव देम अ डे और टू. वो सारी जॉब्स कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू देम. सेम जिस तरह हमजा ने कहा, नॉट ओनली रिलेटेड टू फ्रीलांस. आप अगेन जिसने अभी अलुमनाई वाला चैनल नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन अलुमनाई JIK अलुमनाई लिंक्डइन चैनल. वहाँ आपको कोई जॉब नज़र आ रही है, कोई इंटर्नशिप नज़र आ रही है, एनी इंटरेस्टेड वर्क यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ रीच आउट. आप अगेन मैक्सिमम वो बंदा नो ही कहेगा ना आपको. अगेन और रेयरली, आई थिंक मेरे 12-13 सालों में मैंने जिस भी सीनियर को रीच आउट किया, किसी ने कभी ना नहीं की. तो बिजी होंगे, ठीक है, 2-3 दिन बाद रिप्लाई कर देंगे ड्यू टू वट एवर रीज़न, ट्रैवल होगा, कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन चल रही होगी, बट डू रीच आउट. वी आर हैप्पी टू हेल्प. You guys are like our younger brother and sister, and it was nice talking to you and answering all your questions. Again, I guess that's it. Thank you everyone. I'll try to upload this on YouTube and share it to you guys. Thank you, Sama. Thank you, guys. Thank you, Thank you. Hassan. Okay, guys. Thank you, Have a guys. good night, Allah everyone. Hafiz. Hafiz. Thank you. Office.